you learn that is basically the optical. So optical we consider as you can say the basics. Okay, so most of the things, most of the satellites which is available and the pre-processing techniques also very known to everyone. Okay, so now we are going to discuss about the advanced remote sensing. So in advanced remote sensing there is a three different types of remote sensing techniques we are considering. One is this microwave SAR data processing techniques. Then LiDAR is also there. Some cases we are considering thermal and hyperspectral. So these are the some different and core different types of remote sensing applications which we are usually used to target a different kind of information extractions. Okay. So within that SAR is little complicated. So and because earlier this data we don't have any kind of direct software to process this type of data sets. Okay, so nowadays as the uses of the SAR is more increasing, so the demand of SAR data, okay, so the different types of software companies actually they came and they are developing their softwares to process the SAR data sets. As you are using ArcGIS Pro here, ArcGIS Pro up to 3.0 we don't have any SAR data tool. Okay, so now 3.1 it is given this particular SAR scape analytics, that is basically to process the SAR data. So we will discuss what types of SAR data it can process. In the SAR there is so many variations. Okay, so it's not like that it will support all the data. Okay, so that also you have to know what types of data, what is the techniques of the SAR it is available. Okay, and the many more things are actually there. Okay, in the SAR. So okay, so yeah, this is actually not exactly for ArcGIS Pro. This is we are specifically, I am providing a training over this actually SARscape. Okay, so SARscape is actually a proper tool to process the SAR data and to do whatever the analysis you are doing over the SAR. Most of the time we are doing a lot of things over the SAR and everything it is actually covering. Okay, so why I am showing this slide, because to show you the modules in the SAR. Okay, so what are the modules we have in the SAR and what are the types of processing we are actually doing. So SARscape modules basically means SAR data. If we classified what are the process we are actually doing. So you can say there is three basic techniques will be there, like basics, focusing module, and the interferometry module. Okay, so these are the three basic tools is required which is covering all types of SAR data processing. So basics module, focusing module, and the interferometry module. So the SARscape is actually able to do all these types of module. Okay, so here the first which is coming, that is a basic module. So for the flood analysis you want to focus only this basic modules. We are not going to focus of other modules. And SARscape is only capable to process this basic module. Sorry, it's not SARscape, sorry. ArcGIS Pro. ArcGIS Pro is only capable to process the basic module. Okay, the advanced modules in the SAR, like in SAR, it is called interferometric SAR. Then DIN-SAR is there, differential interferometric SAR. Okay, the intensity time series analysis is also there. Then displacement case studies, which is usually we do over the differential interferometry. And there is one more module is there, that is called polarimetry. And with polarimetry there is one more module that is called polarimetric interferometry, which is not mentioned here. So all these are different types, or we can say the different applications will be there over the SAR. Okay, so if you go all this, then it will be a 1 month, you can say, to train for all this model. This usually from EC sides we in SARscape we are providing training the basics module, interferometry module, and differential interferometry module. Okay, and someone requested, then we can go for the polarimetry module. These are the basics modules which we are usually given the training over the SAR. Okay, base interferometry, differential interferometry, polarimetry. Now there is a few part which we thought to cover today, but I will try to cover it tomorrow. That is ArcGIS online part.
Okay, you are still not did the online part. So with the online part, we have left few things like regression analysis is also left, and sir is also requested for the classifications. So we will try to cover tomorrow some classification techniques. So mostly we will try to focus over you can say the segmented classification techniques. Okay, in general, unsupervised classification technique you understand, and in supervised classification also we will discuss tomorrow the SVM and the object base. Okay, so that is we will try to cover. And I thought to show you the web builder, GIS and so on. So this is it's very timely short, we will not cover, but Chandraman sir will come. So he will going to show you that dashboards, okay, like web apps, then how to collect the data from objects, 1, 2, 3. So all these things he will going to discuss, like mobile apps. Usually on the mobile apps, how we going to work. Okay, so he will going to discuss, I think, in the last day. So now, why SAR? So as we are, I am trying to focus here the basic module. Okay, so in the basic module also ArcGIS Pro is not capable to do all the types of work. Basic modules also we have a lot of different types. Okay, so there is a only specific area only which ArcGIS Pro is capable to work, and it is designed mostly for flood based analysis only, and in general SAR data pre-processing. Okay, so you can do over the ArcGIS Pro. Okay, so but the first important thing you have to know why we are actually using the SAR. Okay, so the main reasons are just like say today morning I 6 o'clock I sit and I try to download your Gujarat area data, and I am not able to get the data for 2000. Sorry, the 17th I think September there is a flood. I got one data for Landsat. Okay, so Landsat it was there 20th October is after flood incident the data is there. But the problem is 90% cloud. I will show you that particular data. I will log in, I will show you. So, if there is a cloud, then how will going to work? Even if I show you the 15th September or 5th September data over the Landsat, that is also having the cloud. Okay, but if I show you the data which is called Sentinel, the SAR data sets, we will show you today. You are also going to download, pre-processing, everything you will going to do by yourself. First I will show you first half, and then second half you are going to do. So there you will see in that satellite image there is a not single patch of cloud is there in the satellite data. Okay, it's a clean data set. Okay, so that's why we are coming to SAR. As you seen here, most of the you can say this optical satellites, whatever we have in this type of optical satellites. So those optical satellites are major problem is the cloud. As you see, the satellite is actually means from the sun, the EMR is coming and it once you go back to the sensor. So it is the cloud is actually stopping that. That's why you are getting the information of the cloud. You will not get information under the cloud. This is a major problem in multispectral data sets. Okay, so to overcoming this, okay, so most of the countries, not most of them, but only 4 countries we have, they have this SAR technology. So SAR is basically, I will show you, there is a specific bands or range will be there, so it can penetrate. Okay, so more if you go, there is a SAR range will be there, bands will be there. So more like KQ, XC, SLP, these are the band range. Which is if you go more down, so more the power of the, you can say, the penetration. So what is more you go down, so that I will show you the next slides. So first is, you just understand, why we preferring the SAR data, because this flood situation, why we are preferring the flood data, the major reason is the cloud. Kharif season, we are trying to understand the paddy productions. Okay, so we are focusing over the SAR data, because most of the time Kharif season it is cloud. Okay, so if you want to focus the agriculture, then you have to go with the SAR data process. Okay, so for here, next slide, as you see. So different types of SAR products is actually available. Okay, so different types of
microwave sensors is actually available. So this we can categorize in a two part. One is the active sensors, one is the passive sensors. Now, what is the passive sensors? You all know, like when sun is the source of energy. So whatever the sun source is coming, that EMA, so that is also having microwave. So few satellites are there which capturing that information. Okay, so from that also we can do it, but most of those microwave stars are actually using for atmospheric studies, not for the surface studies. Okay, now there is another kind of star data sets are available, which is called active sensors. So active sensors we have two different categories. One is imagining sensors, another one is the non-imagining sensors. Okay, so imagining sensors is basically, if you see, means whatever, you can see the image over the data. That is called imagining sensors. Okay, so imagining sensors we have two types. One is radar, real aperture radar. Another one is the single aperture radar. Okay, so these are the two types of them. So here, earlier days, old times like 10 to 12, 15 years back, most of the times we are getting the real aperture radar. Okay, so real aperture radar, what is the difference? Like these antennas are very big. If you see, these antennas are very big in case of the real aperture, very big antennas. Okay, so then because more the bigger antenna, more the signals it can send to the earth, it will hit, come back, more signals it will receive. So to creating the imagining, it's required bigger antenna to sending the signals and receiving. More the bigger antennas, more signals it will receive. So like that it is. So then it will be very costly, because more the bigger size of the antenna, more the weight of the satellites, and more the weight of the satellites, the carrying capabilities of this launch vehicle is required more, the cost will going very high. Okay, so that is related. So for that there is another design, people are scientists have designed, that is basically real aperture radar, centric aperture radar, which basically the small antennas. But what they do, they send the signals and they receive the signals in a different, like if it is send the signals from here, then the satellites move from here to there, and then it is receiving the signals. Like that it is designed. So one antenna can receive this, or else there is a two antennas are actually working. One is sending, another one is receiving. Both the satellites is moving together. So that is how the synthetic aperture radar is designed. Now there is one more active sensors are there, which is basically the scatterometer and the altimeter. Just few minutes back I discussed with the sir. Sir is talking about one satellite which is called ISAC. So ISAC is a kind of a, you can say, the altimeter. Okay. So altimeter, it is just like a LiDAR, sensors will be there. Same like altimeter is also working. It will hit the object and it will come back, and it is hit the, so time durations accordingly it's creating some points value, means some numbers. So using some numbers we trying to understand the water level, or you can say the sea level rise. Okay, so sea level rise and all those things usually we cover with the altimeters. So it is non-imagining, means you will not get any image here, you will get a value. So from the value we will get understand. Okay, so that's why we are not using this type of satellites for any kind of mapping purpose. Okay, so we will try to understand how much sea level is rise or some other areas. We will try to focus over the altimeter data sets. And in passive microwave, as you've seen, that is radiometers, which is basically used for, as I told you, that different kind of atmospheric studies we are actually using this. Now, microwave data, as I told you, that we have different bands. It is not like optical data. Optical data you will get like blue, green, red, near infrared. So after near infrared it is called microwave. So within this microwave range, if you subdivide it, okay. So if you see, this is the right side. If you see, this is our electromagnetic spectrums, and within this spectrum, like visual range, then this is a microwave range. So if we subdivided this microwave range, okay,
So then this is the category of the microwave bands which we are actually using under the microwave range. Okay, so what are those bands? Like this is the bands will be there, like Ka, K, Ku, XC, SLP as you see here. So within this Ka, K and Ku, which is coming the range from 0.8 to 2.4 centimeter. Okay, so that is we usually use for early airborne radar system. Okay, so early airborne radar system क्या होता है कि जैसे this radar is the ground में वो base रहता है, वो ऐसे घूमते रहता है and it's sending the signals. Most of the times you will see the ship में रहता है, सबमरीन में रहता है और हमारा जो बाउंड्री एरिया है उसमें रहता है. क्यों? So it is actually sending the signals and कोई भी enemy aircraft अगर उसमें जैसे हमारा boundary cross करेगा, so this radar is captured that information and sent it to us. So that is what we are actually using for airborne radar system. Okay, so that is basically these are the three bands which is working behind that. Okay, Cafe and Co. Now in remote sensing, what the bands we are actually using? We started using from the XC, okay, so most of the time, one of the famous satellites which are available, you will get over the C bands. Okay, but now there is a uses of S band, L band is also increased. Okay, so what are these are means you have to know what are suitable for what particular work. So X band is basically suitable for military communications and terrain mapping, as X band is very sensitive with the surface changes. Okay, so that's why see suppose there is a tank movement going on or some troops is moving over the surface. Okay, so this type of analysis it can capture using this X band. So that's why military purpose it is using a lot. Now the next which we are using in remote sensing and lot of applications. Okay, so that is the C band. Okay, so whatever we are going to use today also, that is also what the C bands. Okay, so here in radar microwave images, we are not getting a multi-bands like you used in a multispectral, like blue, green, red, and infrared. Here you will not get that type of band. Here only single bands we are getting. What we will get with this, that is a polarization. What is this? We will discuss about this later. But what we get it here, that is single band, either the C band, either the L band, or either the P band or X band. Okay, like that the satellite is actually designed. Now there is a new satellite which will launch very soon, I think this year, which is NASA and ISRO joint program, that is called NISA satellites, and that is also very soon. It will give you the open source, okay, and that is also very good resolution for it. Okay, so which we are going to launch very soon. So that is coming with the two bands, first satellites in microwave which is providing the two bands. Okay, C band and L band. It will come together. So that is a great advantage. Okay, so why? See, C bands having some capabilities. What is that? That is the flood mapping. So what we will going to use today, that is for flood mapping or agriculture monitoring. Okay, or you can say the forest, marine and ocean research. Okay, so all this purpose we usually focus over the C band. So within the C band, what is this wavelength range? Says 3.8 to 7. Okay, so there is a few more things will be there which we will discuss. Called radar geometry, that you have to understand. So accordingly we are actually ordering the data. Okay, so here it is little complicated to download, order and pre-process. Okay, because every angles of radar will change, so accordingly the data is actually going to change. So we have to understand what particular incident angle, okay, will be suitable for what particular analysis. That you have to know. Then only you can pre-process those satellite data. Okay. Now here, if you see here, we have one more band which is called S band. So S band is coming in the range of 7.5 to 15 centimeter. So as I told you, more you go down, more the power of the penetration. So C band can penetrate the cloud. Then S band in some cases penetrate you can say some S band or L band, both. It can penetrate the tree canopies, okay, and it can reach up to the tree trunks.
And the P band or some cases S band, both it is going penetrate the soil also. Okay, so we will show you the next slides. What is the penetration capabilities of what particular bands? So that is what we are actually doing. So here S band is suitable for what? S band is suitable for medium range meteorological applications like rainfall measurements, okay, airport surveillance, okay, so especially tracking and task. So all these purposes we are mostly use the S band. Okay, so now as you've seen here, so next important band for remote sensing application, that is the L band. So L band is very good for forest monitoring. Okay, so most of the time forest, oil spills, boat, ship detections, glacier, okay, ice and the geological applications, we are actually using more the L band. Okay, so which band you have to use for what particular applications? So as you seen, we are focusing over here the water. So in case of water, C bands are good. Agriculture crops, C bands are always good. Okay. So next range is the P band. So P band is basically we are coming the range from 30 to 100 centimeter, and it is also good for the geological studies. Okay, and study of the some cases of vegetation canopies and glaciers, seas, ice, soils. These bands are very much used. Like in India, we focused more over sea bands because we are based on agriculture. But if you go in the northern countries, okay, like US and Canada, they are also focused more on L band or some cases P band because they are doing the glacial studies. And for the agriculture, soil moisture, some cases of flood, they also have the C band radar. Okay, like radar. Radar is a Canadian space satellites, which is the first kind of good data products in the SAR. Okay, that was very costly earlier, but now Sentinel once it came, there is the uses of the radar sat is going less. But radar sat good thing is it is giving the full polarimetric data. What is that? I will be going to discuss now. So before going to the next part, so these are the, I am not going much about the calculations or the basic science of this microwave, otherwise it will be very complicated to understand the microwave signal processing, signal capturing, okay, so the geometry of this microwave or SAR. Okay, so this right side picture as you seen here, this is basically we called as a SAR geometry. So what the SAR geometry, you have to understand, that is few terminologies which is very useful for different kind of analysis over, or you can say the data analysis, data processing, data ordering, every purpose you need to understand these few things. It's better you can go with some microwave book, good book you can go and you can study. Like Relation Keeper is there, is for remote sensing. So in that you can go with the microwave chapter first to get a basic understanding about the microwave. Then only you can come down. Otherwise, application purpose you can use. That's not required much knowledge, but you will not able to understand the results. That is the problem. So most of the people, they data available, software they can do, so they just do the processing, but they don't. If you tell them to interpret properly, so they will not able to get an idea, because if you don't have the proper idea about all these terms and the uses of all these parameters, so you will not get a proper result. If you get the results also, you will not able to explain. So that is the problem. Okay. So now if you see, there is some important terminologies like a range. So across track directions. So there is the two things. One is the range resolutions and another one is the azimuth resolutions. Okay. So these are the two concepts. Like normally whatever you will see in a satellite image, that is a pixel value. So every pixel is a square pixels. As you see this, it's a side looking radar. What is centric object radar? It's a side looking radar actually. So this is the how the flight is actually going, or satellite is actually moving, and accordingly it is scanning like this. So once it is scanning, it is sending the signals from here. So from this to this is your beam width. Okay, so and this is your, we call as a beam width, and that from this point to this point, what is coming, that is called, we call as a slant range. So this is basically the slant range.
and there is a two direction. This is a azimuth direction. Okay, so we are moving towards, so azimuth direction is same towards your flight directions. So this azimuth is actually based on this particular thing, means how your pixel size of the SAR will going to decide on the basis of this. And there is two things. One is, once you are sending the beams, one is the far beam and there is a near range. So far range and near range. Okay, so these are two concepts of far range and near. So from the flight directions, if I consider this, so then it will be my ground range, and my beam, whatever from my near range to my far range, what is the distance, we call it as a swath. Means one satellite scene is covering this much swath. As you see here, as there is a range resolution is coming, like difference with the azimuth. So the pixel size of the SAR is not a square pixels. Okay, so in case of here, we are not focusing more over the SLC products. So SLC usually will not get this type of square pixels, and in case of GRD also we are not getting, but GRD our focus is not that much on this, so it is considering as a square pixels once we are going to GRD product. So what is this, we will discuss during the processing times. Okay, so but this concept you have to understand. So this is we called as depression angle. So from the antenna to the ground incident where it is actually happening. So that is basically that this is called a depression angle, and just opposite of that we call this as a look angle. Okay, and even where it is incident, so this is basically the incident angle. Okay, and then opposite side also grazing angle. So this is if we take the point is a linear. Okay, so then we can go with this, but usually it is not that. So usually surface having they have their own surface. So we consider the antenna angle or depression angle, or you can say the incident angle, gazing angle like this. Okay, otherwise it should be same, but it is not same because the surface is not same. So here is the difference of the how the radar equations we are actually creating. So this is basically the radar equations. If you see the antenna gain, the ability, the antenna of the focus of the radiations in a particular directions express the relative to the ideal antenna, usually expressed with the decibel dB. So this is the we usually called as sigma naught. Okay, so the backscattering value which you have to calculate. Like in usually we get in the pixels the dn value. Okay, so in this case we are going to focus over the dB, that is decibel. Well, we usually call as a backscattering value. So how it is calculated? So this is the dB formula. 10 log is equal to P2 by P1. So P1 is basically reference as a power. So P2 is actually greater than P1 by dB to the positives. That's what it is calculated. So you will not able to understand during the processing because you need to select the dB. Linear to dB we are actually converting, sometimes dB to linear to representing the data sets. Okay, but you try to read this before going pre-processing. You can read some time over the microdata if you want to work in future. Now these are the differences of two images. Can anyone able to tell what is the differences you can see in this two image? So both are actually same area, same place. One is the optical Landsat left side, okay, DM35, and you see this is basically the Cosmos SkyMed SAR data sets. What the differences you find in this two image? Any differences you can find in this two image? Anyone? क्या differences are there? Color को छोड़ के. I'm not talking about color. Resolution. But that is 30 meter and the other is 3 meters. 3 meters. Okay, this is a good observation. But okay, we considered something else. So इस साइड की इमेज जो है उसमें सिर्फ सरफेस की Very बेसिक good. इंफॉर्मेशन में वही दिखे. Very good. Very good. Exactly. This is the major difference. Okay. So if you see this right side, this place, okay. So you will not able to see any changes over here. But if you consider this place, if you see
सरफेस में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा. So that means SARs are very sensitive with the surface change. Okay, so whatever the surface, it is very sensitive with the surface. That's what we observe in the SAR images. Just like this. You understand this observation? So if you see here the same place, you are not going to see any changes over this particular location. But if you see these particular locations, so can you able to see the changes of the surface? Is it clear? So that is what the advantage of the SAR images. And this is the SAR TerraSAR X band satellite. So it is the more sensitive with the surface, as we discussed that time also. Surface में थोड़ा सा changes भी होता है तो X band is good to identify that. But it is also problem for some other things. Okay, as it is very sensitive with the surface. So this is some optical sensors, and this is a SAR sensor. So here the advantage is in the left hand side, the optical sensors, the crop which we see, that is we based on the spectral properties or spectral and texture, both we are considering. Okay, so accordingly we will get a different color. But in this SAR images, as you see, this composite the color is coming. So it is not like the band combinations we are actually using. So here in the case of the band combinations, we are creating multiple types of band combinations, either on the basis of the polarizations or the band ratioing. A lot of the things we are actually doing over the SAR image to get a lot of different types of information. Okay, so that is what you have to understand, because it is not a colored image of the SAR like multispectral FCC which you see over the optical. In case of the SAR, we can't say direct FCC kind of things. Usually we told it as a composite image, SAR composite image. So SAR composition we can create from lot of different types. On basis of the polarizations, ratioing, band combinations. Okay, so lot of the different way, multi-dates. Okay, we can create a different kind of color combinations for the SAR. So why microwave remote sensing? So one, you understand, that is the penetration capability. So active and passive both types of SAR we have, but the main important is the penetration capability, that you understand. You also understand it is a very well capable for the weather, all weather capabilities. No matter it is a cloud, rain, whatever it will be. It can able to capture the information 24/7, day and night operations you can do. That's why for military applications it is using. Okay, lot of the times it is actually using. Now, if you focused over the penetration capabilities, as you see here, the down one. So X band. So X band and how it is affecting with different land use land cover. Just this, check this image. Like this is a vegetation. When I am using the X band, the signal will go back from the top of the canopies. When I am using the C band, it will reach almost trunks, tree trunks, but not the root of the or end of the trunks. But if you consider the L bands, we can reach near to the trunks end. Okay, so if you want to focus a full volume of a particular vegetations, then obviously L bands are much more better for that particular emphasis. Now, if you focus over dry alluvium, so there is a certain range like X band, it will go almost from surface. There is a little more range, C type can penetrate, and if you see the L bands, it can penetrate the more. Okay,
Now glacier ice sheet. So if you have a glacier ice sheet, so then X band not at all penetrating. C band a certain level of penetration. But if you see the L bands, there's a lot of penetrations it is doing over the glacier ice. Okay, so that's why for it is called ice depth estimations. Most of the glacier, okay, so they are actually using this particular L bands. Okay. Now, properties of the microwave remote sensing. So here, first thing is required some system parameters which you have to understand. One is wavelength, second thing is polarization, third thing is the look angle, and last one is the resolution. So when you are order, download anything, you have to know about that particular satellites, this information. Like when you are downloading the satellite image, I told you what the thing you have to know, what is the spatial resolution, what is the spectral resolutions, what is the radiometric resolution, what is the temporal resolution. That is for the multispectral. But when you are downloading and using this type of microwave data, you should know about this. What is the wavelength range? That is based on which band you are getting, like blue, so like KQ XSLP, so that you know from the wavelengths. Then the polarizations, like here, once you download the microwave image, you will get some bands, but that is not a spectral that bands. It is basically you are getting the polarized band. Okay, so like VV, VH, HH, VH. What is this? We will tell you. So that you will get. So that you have to know what are the polarizations you have in that. Some look angle. So according to the look angle, because we are sending the signals in some particular sides, you are hitting an object. So one side if I hit, it will come back, it will give a different impression over that optic object. I will send from this side I am sending signals and it will receive. So some different informations of that particular image I will get. Same object, different look angle, it is looking different. Okay? So that is the one thing which you have to know for what is the look angle for this particular satellites. Next is the resolution. Resolution you all know. Okay? I told the second demo. Here the resolution concept is same, but here we basically focused your pixel resolutions, the spatial resolution is based on azimuth and range resolution. It's based on that. And each satellite was different. So you have to know what should be the perfect pixel size you can create from the azimuth and that range resolution. Now few target parameters also you have to know. So within the target parameter, one is the surface roughness, second one is the moisture content and slope orientations. So surface roughness अगर बहुत ज़्यादा है उसमें noise आएगा. So the technique of processing is different. Then moisture content, अगर आपके surface में moisture ज़्यादा है, so SAR images is very good to identifying the moistures. So that's why most of the SAR image actually use to predict the soil moisture in the soil. And this will be a very good parameters for the farmers. Okay. Now there is one more thing, that is the slope orientations. Okay, so that also we will see. Now why the synthetic aperture radar is actually measures. Okay, see the roughness. That is the higher the object roughness, the larger the fractions of the energy will reflect back to the radar. That's why जो इमेज आपने देखा उसमें देखना सरफेस का चेंजेस आपको इतना ज़्यादा क्यों लगा, बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव विद द रफनेस. ओके, एंड इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं क्रॉप की आइडेंटिफिकेशन.
ओके जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है राइट साइड में, देखिए। सो वंस ये पैडी का है जो हम लोग करते थे। सो पैडी इज बेसिकली वन जब में इसको स्नोइंग हो रहा है, ओके, सो देयर इज नो सिग्नल टू द SAR sensor. So that's why it is go back, there is no signal is going back. Signal is going away from the antenna. Is basically we call as a specular reflections. तो इसलिए SAR इमेज में वाटर बॉडी बहुत ब्लैक दिखता है। नेक्स्ट टिल्टिंग। सो जैसे ही वो जो पैडी है पहले तो पानी डाल के रखते हैं उस पर, जैसे ही 10-15 दिन हो गया उसके पैडी क्या करता है वाटर से निकल के ऊपर आ जाता है ना, ग्लासेस निकल के बाहर आ जाता है, वैसे ही पानी के जैसे ऊपर आ गया there is a strong changes in the signal. You will see the bright. It was black just 10 days back. Now in the SAR image you will see the very bright. So that is basically this volumetric scattering is started from the image. See there is a 3 different types of reflections when it is hitting the surface. One is once it will hit the water and it is going away, that is called specular reflections. Okay, so this is the reason once it is a snowing stage, I am not getting any information, it's coming black. Now once it is start growing, okay, so the reflecting from the trees and some cases it is double bouncing. So more the tree will grow, more the power of double bouncing will increase. So here you see the signal is coming strong. Again it is more crop will grow, more the signals will coming strong. Okay, so like that it will go in a top peak, and once it will harvested, again it will go down. So that is how the radar phenology is actually working. Okay, so I told you about the phenology, about the optical data, कैसे हम लोग करते थे, NDVI को लगा के फिर पिक्सेल्स का वैल्यू लेके भी करते थे. So here it is working like this. Temporal images. We are using the temporal images, but the backscattering value we can get an idea of the crop. ये थोड़ा complicated है, is it not easy, but it is there. Now there is few more reflections like diffuse, like if it is a कोस्टल एरिया पे हो गए तो उसमें जहाँ पे वेव्स हो रहा है उससे जो रिफ्लेक्शन आता है इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस. और यहाँ पे कोई बिल्डिंग हो गया, सो बिल्डिंग में डबल बाउंसिंग इफेक्ट होता है. जो ट्रीज में आता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग. और जो यहाँ पे कोई बिल्डिंग होता है तो क्या होता है, देखो ये राडार का सिग्नल ये बाहर आया, सपोज ये ट्री नहीं है, ये बिल्डिंग है, तो पहले ये बेस को हिट कर रहा है, फिर ये जाके बिल्डिंग को हिट कर रहा है, फिर वो वापस आ रहा है, 2 बार हिट करता है, 2 टाइम्स. सो एनी मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट उसमें डबल बाउंसिंग का इफेक्ट ज्यादा रहता है. तो इसलिए कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी बिल्डिंग्स होगा, कोई भी आयरन स्ट्रक्चर होगा, उसमें डबल बाउंसिंग बहुत ज्यादा आता है. वी कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली. तो सिटी एरिया में कहीं पे ब्रिज है, ठीक है, नहीं तो सी में कहीं पे शिप है, ठीक है, शिप मूवमेंट हो रहा है, तो ये सारे चीज इट इज वेरी इजीली आइडेंटिफाइंग ओवर द SAR images because of this double bouncing effect. Clear? Now ये होता है प्लांट ग्रोथ, जब मैं अभी बताया था ऊपर. ओके, सो इफ यू सी हियर प्लांट का जो ग्रोथ है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइम सीरीज ऑफ द डेटा सेट्स, नॉट अ सिंगल डेट. इसमें मल्टी डेट की जरूरत होता है. Okay, so from the multi-dates image we have to create a phenology card like this, and then only we can identify the crops. ये भी बहुत ही मतलब बहुत सारा images, you require a very strong place. मतलब इसका जो डेटा होता है बहुत heavy होता है. आज डाउनलोड करेंगे, so let's see आप लोगों का सिस्टम में कितना होता है प्रोसेस. Let's see. Now the properties. तो इसमें जो मेन मेजर प्रॉपर्टीज होता है that is the polarization. अब polarization पोलराइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों का माइक्रोवेव इमेज में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा. जब आप डेटा को डाउनलोड करोगे, सो यू विल गेट
दिस टाइप ऑफ फोर बैंड नहीं भी रह सकता है, जैसे एच रह सकता है, ई भी रह सकता है, कोई भी एक रह सकता है, एच भी रहे, या तो वी भी रहे, नहीं तो एच वी भी रह सकता है, नहीं तो एच भी रह सकता है, नहीं तो वी रह सकता है, नहीं तो ये पूरा रह सकता है। तो हर एक को अलग अलग कॉम्बिनेशंस नाम दिया जाता है। इसको बोलते हैं कोपोलराइज्ड, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलराइज्ड, ठीक है, कोपोलराइज्ड, क्रॉस पोलराइज्ड, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर 4 कॉम्बिनेशन एक साथ आता है इसको बोलते हैं फुल पोलराइज्ड, ओके, फुल पोलराइमेट्रिक इमेज। सो फुल पोलराइमेट्रिक जैसे सरारा सेंटिनल जो है फुल पोलराइमेट्रिक, वो पोलराइज्ड, मतलब एक बीबी मिलेगा और कोई एच मिलेगा, 2 बैंड मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज क्या होगा, बीबी एचबी, ये क्या होता क्या है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा सैटेलाइट है। तो यहाँ से सैटेलाइट से मैं सिग्नल छोड़ रहा हूँ, अगर एच हुआ तो इट विल बी गो लाइक दिस, इट क्या एच मतलब सॉरी सपोज वी में मैं सिग्नल सेंड किया, और जब वो वापस आ रहा है सिग्नल, वो भी ऐसे करके ही वापस आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड वी। अब एच भी क्या हो जाएगा, एच भी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मैं एच मतलब हॉरिजॉन्टली छोड़ रहा हूँ तो ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, ये किया, ये हॉरिजॉन्टली किया और आने के टाइम वर्टिकली आया, एच। सो वी एच, और उल्टा होता है तो एच वी, ठीक है। सो वी वी वर्टिकली जाएगा, वर्टिकली आएगा, एच हॉरिजॉन्टली जाएगा, हॉरिजॉन्टली आएगा, वी एच वर्टिकली जाएगा, हॉरिजॉन्टली आएगा, और एच भी हॉरिजॉन्टली जाएगा, वर्टिकली। सो दिस आर द पोलराइजेशन। तो ये सिग्नल्स डिफरेंट साइड से छोड़ने का कारण ये हुई है कि मैं जब मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से छोड़ के सिग्नल छोड़ रहा हूँ, ये रिसीव हो रहा है, और जब ये जाएगा, ये रिसीव होगा, तो अलग ही इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे तब देखना, मैं 2 इमेज को, मतलब इसमें एच एक वीवी होगा, एच भी होगा। अब वीवी में इमेज दूसरे टाइप को दिखेगा, एच भी में इमेज आपको दूसरा टाइप को दिखेगा। अब आपको जानना है कि विच मतलब विच जो पोलराइजेशन से इज गुड फॉर व्हाट, ठीक है। तो ये हम लोग प्लग में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लाइक वी आर फोकसिंग मोर ऑन द वीवी देन वीएच। अभी देखना वीएच में इंफॉर्मेशन से ज्यादा जब वीवी करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रॉन्ग, बट उसमें भी बहुत सारी चीज रहता है, डिस्प्ले एंगुलर मतलब एंगल रहता है, ठीक है। सो और एक होता है, वो टर्म मैं भूल गया, प्रीसीडिंग और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये भी रहता है, ठीक है। तो जब डेटा हमारा डाउनलोड कर रहे हैं, सो वी शुड कंसीडर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, descending path, ascending path, polarizations, okay. So all these things we have to understand. So ये image से you will get an understanding कैसे सिग्नल छोड़ रहा है VV and कैसे रिसीव हो रहा है, HH में ऐसे जा रहा है, ऐसे एडजस्ट कॉम्बिनेशन कर दिया तो HV उल्टा कर दिया VH। और यहाँ पे देखिए सेम प्लेस है, सेम जगह है, ओके। HV में, ये HH में, और ये VV में, हर एक में डिफरेंस है, ओके। सो दैट वी हैव टू नो व्हिच कॉम्बिनेशंस इज सुइटेबल फॉर व्हाट पर्टिकुलर, क्लियर। नाउ अभी फर्स्ट होता है डेटा को इंपोर्ट करना, सो दैट इज फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग। सेकेंड होता है डेटा को क्लियर करना, दैट इज ऑल्सो अनदर प्री प्रोसेसिंग। सो डेटा क्लियरिंग मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग द सार इमेज देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइसेस। यूजुअली हम लोग ये नॉइस को बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइस। तो सबको डॉट 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 जैसे दिखेगा। तो देखना अभी मैं वाटर के ऊपर जब थर्मल नॉइस रिमूवल करेंगे, फिर एकदम फाइनल स्टेज में जाके डिस्प्लेकिंग फिल्टरिंग लगाएंगे, जिसमें डेटा क्वालिटी को इंक्रीज करें। So what we are actually going to do it there. So now this is what, if you see here, C band SAR high resolution airborne image,
and after filtering what is the image. So before filter if you see उसमें थोड़ा सा रफनेस ज़्यादा है, सब ज़्यादा है, और जो फिल्टर्ड इमेज है वो थोड़ा स्मूथनेस ले आता है इमेज के ऊपर. So that is what we are doing the filter over the SAR images. Now when we are working over the hilly area, it's a big challenge. मैं देखना बहुत सारा फ्लड हुआ है, सो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली सब हो जाता है, बट हिमाचल का आइडेंटिफिकेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट. हिमाचल में जो फ्लड हुआ है, साफ नॉट मच एनालिसिस विल गेट, क्योंकि मेन प्रोसीजर प्रॉब्लम होता है उसका जियोमेट्री, सरफेस जियोमेट्री. तो इसमें फर्स्ट 3 टाइप्स का प्रॉब्लम हम लोग को फेस करते हैं when we are considering SAR image over the hilly. So first होता है layover. So layover, what it is doing? So if you see here, first one is the layover. तो इसमें क्या होता है, जो सिग्नल होता है ये पहले बेस में पहुंचता है और उसके बाद वो टॉप से सिग्नल वापस जाता है. सिग्नल तो एक ही छोड़ रहा है, ऐसे करके आ रहा है कर्व, लेकिन कर्व का जो बेस है वो पहले पहुंच जाता है और सिग्नल का जो टॉप है वो बाद में पहुंचता है. तो इसलिए क्या होता है, सिग्नल थोड़ा सा ऐसा दिखता है, जो पहले पहुंचेगा वो सिग्नल ऊपर आएगा, जो नीचे तो वो नीचे चला जाएगा. तो आपको लगेगा कि जो पहाड़ है वो सो गया है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लेओवर. और उसके जस्ट ऑपोजिट होता है फोरशॉर्टिंग. अगर इन सम केसेस जो बेस है, मतलब जो टॉप है वहां पे सिग्नल बाद में पहुंचता है और बेस में पहले पहुंचता है, तो उल्टा सिचुएशन दिखने को. एक बार इधर जाएगा तो दूसरे में लगेगा कि इधर से हो गया, तो ये हो जाता है फोरशॉट. और एक प्रॉब्लम क्या होता है हिली रीजन में, दैट इज शैडो. जहां पे मेरा हिट किया और वापस चला गया, लेकिन उसके जो साइड वाला है ऑपोजिट पार्ट, वहां पे सिग्नल पहुंचा ही नहीं. तो जहां पे सिग्नल नहीं पहुंचता है वो शैडो एरिया होता है. तो जो मल्टीस्पेक्ट्रल में शैडो होता है वो डिफरेंट होता है, और यहाँ पे बेसिकली जो शैडो होता है दैट इज बेसिकली द सिग्नल विल नॉट गोइंग टू रीच द अदर साइड. दैट इज व्हाट वी कंसीडर एज द शैडो. ओके, तो दिस इज द मेजर इश्यूज इन SAR. इट्स कॉल्ड डिस्टॉर्शंस. अभी मैं और ज़्यादा ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस आई एम नॉट गोइंग देयर, बिकॉज प्री प्रोसेसिंग के लिए एक्चुअली यू हैव टू नो फिल्टरिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, इंपोर्टिंग के टाइम क्या होता है. बट एज योर फोकस इज मोर ऑन एप्लीकेशंस, सो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस. सो हियर व्हेन वी ऑर्डर द SAR इमेजेस, तो उसमें और एक चीज very important, there is a mode. What is the satellite modes? So here this is an example of our RISAT, जो इसरो का सैटेलाइट है, उसका डिफरेंट मोड का डेटा. So normal we called it is called fine resolution image, so that's called FRS data होता है, FRS. So FRS का जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस होता है, that you can see it here. सिग्नल छोड़ा, then ये दूसरे जगह पे सिग्नल रिसीव हो रहा है. So like that it is continuously moving. That is what FRS mode. Scancer mode, see how it is captured. दूसरा मोड होता है सैटेलाइट कैप्चर. फिर होता है फाइन ट्यून स्ट्रिप मोड्स. So this is how the satellite is capturing the information. फाइन ट्यून स्ट्रिप मोड्स. और सबसे हाई रेजोल्यूशन डेटा जिस मोड पे मिलता है that is called हाई रेजोल्यूशन स्पॉट मोड. सो स्पॉट डेटा जो होता है SAR में, सो दैट इज हाई रेजोल्यूशन. मतलब ये जो डेटा होगा ये इसका रेजोल्यूशन 1 मीटर के आसपास ही आ जाता है, स्पॉट मोड. ओके, बट टेम्पोरल रेजोल्यूशन से बहुत ज्यादा रह जाता है. ओके, सो दैट इज हाउ द डिफरेंट मोड. अभी देखना जब मैं डेटा डाउनलोड करूंगा तब देखना वहां पे मैं मोड सिलेक्ट करूंगा. सो यू शुड नो
अभी ये तो राइट सकते, ये तो राइट सकते हैं, लेकिन जो हम लोग अभी सेंटिनल 1 के लिए करेंगे, that is different mode we are going to use. So what are the mode I am going to download? So according to that, my swap area is depending. Swap क्या होता है? Swap क्या होता है? ना, swap क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए. Exactly. So एक सैटेलाइट का जितना एरिया कैप्चर, that is my swap. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो डिफरेंट आप मोड देख रहे हो, ये हर एक मोड का डिफरेंट स्वाप होता है. सो इसीलिए आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा मोड इज सुटेबल फॉर. नाउ यू जंप टू द एप्लीकेशंस. यहाँ पे मैं पहले एप्लीकेशंस के बारे में बोल रहा हूँ, कहाँ क्या क्या एप्लीकेशंस होता है सार का. फिर उसके बाद एक रियल एप्लीकेशंस मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे वहाँ पे हुआ था, अम्फान बोल के एक साइक्लोन हुआ था. As of now, it is the biggest cyclone in the eastern India. पूरा इंडिया का भी हो सकता है, I have no idea. But obviously, and that is we observe. मतलब मैं उस टाइम उस साइक्लोन के अंदर ही हम लोग थे, कोलकाता के ऊपर से लिया है साइक्लोन. Okay, so and what is the devastation it did? So that also we are going to show you, and how we did the analysis using the SAR data. So we are going to see that, and so many examples we are going to show you today. Then I will going to show you the pre-processing steps and how we process, download, process SAR data, and you also going to do the hands. So now, very first thing, it is very useful for flood mapping, as we are going to do it now. And why flood? Water is sensitive with the SAR images because of the specular deflection. This is the one reason. Second one is the soil moisture. So after flood, whatever the moist soils will be the waterlogged. So that also very easily identifiable from the SAR image because the dielectric constant. The property जो हम लोग यूज करते हैं soil moisture identify करने के लिए, that is basically dielectric constant. वो क्या होता है? You just check in Google later. Okay. फिर दूसरा चीज होता है for agricultural monitoring. As you see here, crop का जो growth होता है accordingly SAR signals will change. और different multi-temporal SAR data से we can identify different types of crops information. Okay, क्योंकि हर एक जो लीफ होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो जितना क्रॉप ग्रो करेगा उसका लीफ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. अकॉर्डिंगली सिग्नल्स इज कमिंग चेंज. सो उसको लिए आपको जीटी चाहिए. देन यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट पर्टिकुलर क्रॉप्स इज लुकिंग, हाउ इट इज लुकिंग ओवर अ डिफरेंट प्लॉट्स. स्ट्रॉन्ग जीटी चाहिए होता है डायग्राम्स पे काम करने से पहले. नेक्स्ट होता है अर्बन डेंसिटी मैपिंग. जैसे I did my PhD on this. So यहाँ पे दो चीज होता है, क्योंकि अर्बन एरिया में it is a very good signals which we are getting from the SAR because it is a double bouncing effect is there over the urban image. So ये एक चीज होता है. बट यहाँ पे दो प्रॉपर्टी को हम लोग काम में लगाते हैं अर्बन एरिया के लिए, इवन क्रॉप के लिए भी कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली यहाँ पे जो दो पार्ट होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है और एक फेस होता है. मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक पार्ट बोर्ड बता रहा हूँ, इसीलिए एम्पलीट्यूड पे ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं. फेस का डिफरेंसेस मैं आपको नहीं समझ. फेस हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इंटरफेरोमेट्री के लिए. सो सार इमेज पे इंटरफेरोमेट्री एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग फेस डिफरेंसेस, मतलब ये जो सिग्नल छोड़ रहा हूँ, हिट कर रहा है, कम बैक हो रहा है, इसमें टाइम ड्यूरेशन जो आता है. सो दैट इज व्हाट, उसके ऊपर बेस करके फेस का जो डिफरेंस है बेस करके भी वी आर कैलकुलेटिंग द हाइट और सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज. उसमें जो मेजर प्रॉपर्टीज है कोहेरेंस होता है. तो अर्बन एरिया में कुछ सर्टेन चेंज होता है तो वो कोहेरेंस पे दिख जाता है. जैसे कहीं पे अर्थक्वेक हो गया या तो बूम ब्लास्ट हुआ है सिटी का किसी पार्ट पे, इंस्टेंट डैमेज होता है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग कोहेरेंस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. तो ऐसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है डिफरेंट way में we are actually identifying dots. Now there is ये जो मैं बोला कि interferometry. So interferometry technique is also useful for the land subsidence. Subsidence बहुत जगह पे हो रहा है. जैसे अभी उत्तराखंड में आपने देखा बहुत जगह पे क्रैक डाउन हो गया है,
ठीक है, लाइक कोलकाता इज ऑल्सो सब्सिडी, मतलब यहाँ का जो एक्वीफर है उसमें इतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है and there is a high-rise building over the Kolkata city, so Kolkata city is going so much. So that is also observed in the land subsidence techniques using the interferometry. Okay. Geomorphological applications, lot of geomorphological applications, geology पे हम लोग बहुत यूज करते हैं, for surface studies के लिए हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं. Then snow mapping, as you already seen, snow depth, snow कवर का जो एरिया होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस सार डेटा. एंड देन द राइस मैपिंग ए पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ओनली, बट राइस मैपिंग के लिए स्पेसिफिकली वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस. इज वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको पूरा स्टडी बताया कि कैसे हम लोग एमसी में करते हैं कि पैडी का पहला स्टेज जो होता है पूरा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आता है. जैसे ही वो पानी से बाहर आता है 15 दिन में वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स. तो जितना ग्रो करेगा उसके साथ सिग्नल स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा. फिर उसका हम लोग फिनोलॉजी का बना के वी कैन क्लासिफाई द पैडी क्रॉप्स. So now this is the example of that cyclone which we faced that time. Okay, so this is basically the super cyclone storm, which is known as the Amphan, which is a powerful and deadliest tropical cyclone that has caused the whispered damage in eastern India. Okay, it's basically Bangladesh also. Few part of Bangladesh, but major जो गया था West Bengal के ऊपर से गया था. It was actually strongest cyclone strike in the Ganga Delta, okay, of the 2007 sessions, and the first super cyclone storm is occurred in Bengal in 1999. ये एक होता हुआ था उड़ीसा में सुपर साइक्लोन एक आया था 1999. That time we are in school. Okay, so उसके बाद उससे 2 गुना ज़्यादा strong साइक्लोन ये था. But this is the differences in the technological advancement, you can say. 1999 Odisha, the death was almost 10,000 people. 10,000 people का death हुआ था. But because of this Amphan, this is a much more bigger cyclone, the death was 0. That's what the India is developed their technology in satellite. और ये possible ही हुआ था satellite technology के ऊपर. अब कैसे हम लोगों ने इसलिए also we are monitoring 24 hours how it is actually developing. वो कैसे करते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे. उसमें एक पार्ट है शेयरिंग वाला पार्ट, वो मैं कल दिखाऊंगा आपको. साइक्लोन का मॉनिटरिंग का ऐप कैसे बनाते हैं हम लोग. सो कल आपको शेयरिंग के टाइम में दिखाऊंगा. यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है इसका, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट. सो इट वाज द यू कैन से द थर्ड सुपर साइक्लोन इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1582 के बाद से 17 और 1833 3 मेजर साइक्लोन हुआ था. उसमें के बाद ये वाला जो साइक्लोन है that is the most dangerous cyclone. You see how much properties was damaged. And ये जो पिक्चर आप देख रहे हो नीचे का वो मेरे घर के ऊपर छत से लिया हुआ पिक्चर है और एक पिक्चर है. So that is the time साइक्लोन आने से जस्ट कुछ टाइम पहले का ये पिक्चर था. और ये तो सैटेलाइट उस टाइम का वो हम लोग मॉनिटर कर रहे थे नोवा का सैटेलाइट से. इसका स्क्रीनशॉट है ये जो आप देख रहे हो. दिस इज द व्हाट यस. सो इसको बोलते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग. सो वंस कहाँ पे ये लैंडफॉल करेगा. सो देयर इज व्हेन आई विल शो यू टुमारो कि जो हमारा लिविंग एटलस प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारा लाइव डेटा सर्विसेज मिलता है. सो लाइव डेटा सर्विसेज मीन्स यू कैन ट्रैक द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट्स एंड दैट satellite data you can use to create any kind of dynamic maps. And that maps you can convert as a web apps and you can use and check the live conditions of the cyclone movement in your mobile. जैसे windy है ना ऐप सब लोग यूज करते हैं साइक्लोन के टाइम windy. So that same thing you can prepare for yourself by the ArcGIS online और ArcGIS portal आपके पास है. सेम आप खुद बना सकते हो. ओनली टेकिंग दिस ऑल लेयर्स. जैसे यहाँ पे 2 लेयर्स लिया है. एक था इसके ऊपर ये राइट साइड वाला जो आप देख रहे हो. दिस इज ये IMD का लेयर है. पहले उससे हम IMD का हम लोगों को नहीं मिलता था बट हम लोग ने क्या करते हैं ये नीचे का जो ये सैटेलाइट इमेज देख रहे हो दैट इज बेसिकली योर वी आर कमिंग फ्रॉम नोआ. वी हैव अ कोलैबोरेशन विद नासा. तो नोआ का जो सैटेलाइट है वो डायरेक्ट हम लोग को एक्सेस हो जाता है
और ये जो मैप है ये हम लोग डिजाइन, ये इसका जो प्रिडिक्शन देता है वो आईएमडी देता है और नासा भी देता है कि कहाँ पे हिट कर सकता है ऑब्जेक्ट वो साइक्लोन लैंडफॉल। और ये इसको बोलते हैं बफर। वी क्रिएटिंग अ बफर कि साइक्लोन का स्पीड कितना है, बारिश कितना हो रहा है, कितना डिस्ट्रिक्ट से अफेक्ट कर सकता है, तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेयर भी अवेलेबल है लिविंग एटलस में, तो वो भी हम लोग डाल देते हैं। देन वी क्रिएट अ प्रॉपर ऐप और उसमें आपको देखिए सिवियरिटी के हिसाब से वो दिया हुआ है। सो 19 मतलब 20 में से मतलब वो स्टार्ट हो रहा है 19 में, ओके। एंड ये होता है उसका सबसे मतलब वेरी सीवियर साइक्लोन जो कन्वर्ट हो जाता है। VS मतलब वेरी सीवियर साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज द कंडीशन, ओके। सो 18 में अप्रॉक्सिमेटली 12 अम्फान इज एक्चुअली हिट, ओके। सो 240 km/h स्पीड पे। तो ये देखिए इतना स्पीड है इसका, थोड़ा सा प्ले करता हूं। लॉरी भी, तो ये लॉरी को भी जस्ट वो पास हुआ था, ये लॉरी भी एक्चुअली दे हेवी लॉरी होता है, ये सारे जो लॉरी होता है वेरी हेवी था। सो हाउ इट इज एक्चुअली मूविंग, एंड ये खिड़की से लिया हुआ पिक्चर है नेक्स्ट वाला। So this is the how the cyclone was came that time. It is go over our house actually. जो पूरा कोलकाता है उसमें एक पैच हो गया था, मतलब जहाँ से गया था उसको पूरा समझ में आ रहा था कि कहाँ से ये मूवमेंट हुआ है। बिकॉज इफ यू सी द नेक्स्ट इमेज, सो दिस आर कंडीशंस। मैंने अपना जो हाउस है उसका 1 किलोमीटर का एक बफर जनरेट किया था आप जैसे तो करके आई डिड अ सर्वे। मैं उस नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में निकला, मोबाइल में फोटोग्राफ्स लिया और उसको जियो टैग कर दिया। सारे फोटोग्राफ्स मैंने जियो टैग कर दिया, कहाँ का क्या क्या लोकेशन है। एंड दिस इज द कंडीशन। सिर्फ जो नीचे वाला राइट साइड का जो इमेज है वो एक मतलब सुंदरवन का एक पार्ट का इमेज है। एंड अदर्स जो पहले 3-4 इमेज आप देख रहे हो, सो दैट इज मैं इसका एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि मतलब बहुत लोग मतलब सिटी एरिया में चलो ठीक है, वी आर एक्चुअली सेफ और बिल्डिंग्स आर स्ट्रॉन्ग, बट गांव का हालत तो ऐसे होता है। ओके, सो दैट इज लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली लॉस्ट देयर होम्स। एंड ये सिटी का अंदर का कंडीशन, एंड दैट इज नॉट टोटल सिटी, इट इज जस्ट 1 किलोमीटर बफर ऑफ माई एरिया। मैं 1 किलोमीटर बफर में बोल रहा हूँ। ये जो ट्रीज फॉल डाउन देख रहे हो आप, दैट वी आई काउंटेड, दैट इज more than 80 trees was fall down. 80 trees in a 1 kilometer area it was fall down in the city. 5 दिन तक हमारे वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। 5 days इलेक्ट्रिसिटी, पहला 2 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे 5 days होता है वहाँ पे जो सिटीज है, दिस आर कॉल्ड मल्टी राइजिंग सिटीज। मतलब स्पेस यूज अगर करते हैं ना, जब सिटी का ग्रोथ कम हो मतलब हाईएस्ट पीक में चला जाता है, देन सिटी वर्टिकली अप डाउन होता है, मतलब वर्टिकल बिल्डिंग्स आपका ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो सोच लीजिए कि कोई फ्लैट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैटरी बैकअप खत्म हो जाता है 3 दिन में, ठीक है। 5 days 7 days जिनका हो गया है, सो हाई राइज बिल्डिंग्स दे आर नॉट गेटिंग वाटर। ऊपर से उस टाइम कोविड का सिचुएशन चल रहा था, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम, सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग एंड ह्यूज क्राइसिस। सो पीपल आर फॉरगेट अबाउट द कोविड, दे सब लोग बाहर आ गए थे। खाना मतलब तो चलो ठीक है, लेकिन पानी कुछ नहीं मिल रहा था, पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों एकदम नहीं, ठीक। सो वो जनरेटर्स हायर किया जा रहा था, एक जनरेटर्स कुछ 20,000 रुपए ले रहे थे 1 घंटा चलाने के लिए। क्या करते थे, एक बिल्डिंग में जितना लोग थे सब लोग मिलके एक जनरेटर हायर करते थे, दे विल पंप द वाटर एंड देन टेक इट फॉर द अनदर 2 days। इसके लिए 20,000 रुपए देना पड़ता। सो नाउ आई कम टू द एनालिसिस। सो इसको एनालिसिस करने के लिए, सो दैट टाइम आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ images,
दैट इज बेसिकली द मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजेस वी आर नॉट गेट। तो जो टेक्निक आपने देखा उसमें भी मैंने एक एनालिसिस किया जो पहले हम लोगों ने सीखा था उसका भी मैं एक केस स्टडीज दिखाऊंगा। सो दैट इज over the multispectral during the Tikli cycle, which is affected by that in Odisha. So उसका भी एक कहानी है, that is I also stuck in that flood. वही ट्रेनिंग के टाइम जाके, but that is data was available in the multispectral, but here no multispectral data is available. So then SAR data is available for these studies. So SAR data में मैंने क्या यूज किया था यहाँ पे? So usually you should go with GRD प्रोडक्ट। अभी जैसे हम लोग करेंगे वो GRD प्रोडक्ट में करेंगे, बट यहाँ पे मैंने यूज किया था SLC प्रोडक्ट। SLC क्या होता है? सिंगल यूज कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है, which consists the focused SAR data, georeferenced using the orbit, attitude, okay, data from the satellites providing a zero Doppler satellite range, and products include the single looks, each dimensions of the full transmission, signals, bandwidth, consist the complex samples and preserve the phase informations। इतना बड़ा साइंटिफिकली चीज आपको दिमाग के ऊपर जाएगा। बेस्ट चीज ये है, देखिए लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है फेस इंफॉर्मेशन, सो दैट इज बेसिकली एसएलसी में एक्स्ट्रा रहता है। जो जीआरडी प्रोडक्ट, अभी इसमें दो प्रोडक्ट रहता है जो एसएलसी मतलब जो हम लोग डाउनलोड करेंगे अभी सेंटिनल का, ओके, इसमें दो प्रोडक्ट रहता है, एक जीआरडी रहता है और एक एसएलसी रहता है। तो एसएलसी प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें फेस इंफॉर्मेशन रहता है, और जीआरडी में वो फेस इंफॉर्मेशन रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है। तो उस टाइम मेरे को इतना मतलब नॉलेज नहीं था, तो मैंने एसएलसी से ही किया। नॉलेज नहीं था मतलब मैं आई नेवर यूज्ड दैट सार डेटा फॉर दैट टाइम फॉर दिस पर्पस, तो इसलिए मैंने एसएलसी डाउनलोड कर लिया। फिर बाद में जब मैंने स्टडी किया देखा कि इट इज बेटर टू गो विद जीआरडी, बिकॉज एसएलसी का जो साइज होता है, फाइल साइज, वो 8 GB के आसपास है। मतलब जब डाउनलोड करते हैं आप 8 GB डाउनलोड में 3 घंटा लगता है। फिर उसको प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट इंपोर्ट करेंगे वो 15-16 GB तक चला जाता है। फिर कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद आपका सिस्टम 40-50 GB तो वो ऐसे ही ले लेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है एसएलसी के साथ, ओके। सो दैट्स व्हाई जीआरडी इज अ लिटिल लेस हेवी डेटा सेट, 1 GB के आसपास हो जाता है। प्री प्रोसेस करने से 5-6 GB तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। पूरा आपका प्रोजेक्ट 15-20 GB तक हो जाता है, ठीक है। वो मैं एक सीन का बोल रहा हूँ। और मल्टी टेम्पोरल सीन्स इफ यू आर टेकिंग मोर, ज़्यादा जितना ज़्यादा सीन लोगे उतना आपका वर्क स्पेस आएगा। तो इसीलिए सार को करने से पहले बेस्ट है कि यू बाई अ हार्ड ड्राइव, ओके। अपना हार्ड ड्राइव में डेटा रखिए, प्रोसेसिंग करके फिर उसमें डूबे, तो आपका सिस्टम 2 दिन में चलेगा। और 8 GB में प्रोसेस करने में क्या हालत होता है वो तो आज देख आप लोग करेंगे, आप लोगों का सिस्टम में मेरा कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है दैट इज द पोलराइजेशन। मैंने आपको अभी बता रहा था ना HHVV, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंगल पोल डेटा बोलते हैं, ठीक है। सिंगल पोल, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था, दैट इज सिंगल पोल डेटा। HH प्लस HV और VV प्लस VH, इसको बोलते हैं डुअल पोलराइज्ड, ठीक है। क्योंकि दो पोलराइजेशन आपको मिल रहा है इसलिए बोलते हैं इसको डुअल पोलराइज्ड, ओके। और एक होता है को पोलराइज्ड एंड क्रॉस पोलराइज्ड, ठीक है। तो वो भी रहता है। और जब हम लोगों को 4 सेंसर का मोड एक साथ मिलता है वो होता है फुल पोलराइज्ड, ठीक है। और सेंसर मोड IW इंटरफेरोमेट्रिक वाइड, ये देखिए राइट साइड में ये सेंटिनल का दिया हुआ है, देखिए हर एक का स्वाट अलग है। सो ये होता है एक्स्ट्रा वाइड स्वाट मोड, तो ये एक पूरा स्वाट होता है, सी ऐसा आता है, ठीक है। इंटरफेरोमेट्रिक वाइड जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, सो वो कुछ ऐसा दिखना है, इंटरफेरोमेट्रिक वाइड, ठीक है। फिर होता है स्ट्रिप मोड, सो ये होता है आपका स्ट्रिप मोड, ओके। और एक होता है वेव मोड, बट यूजुअली फ्लड के लिए वी आर यूजिंग दिस वन, इंटरफेरोमेट्रिक वाइड मोड। लार्ज एरिया को कवर करता है, यूजुअली फ्लड इज हैपेंड फॉर द लार्ज एरिया। सो हम, और इसका जो रेजोल्यूशन क्वालिटी वो भी फिक्स है। सो इसलिए थोड़ा सा ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स है ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना डाउनलोड करने से पहले, तो आपका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सो व्हाट इट इज एक्चुअली, ठीक। सो नाउ इंटरफेरोमेट्रिक वाइड मोड, ये है पूरा मेथडोलॉजी। ये एक्चुअली
नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क फॉर दिस टोटल वर्क। तो पूरा टोटल वर्क हम लोग नहीं करेंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए मुझे 2 डेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एज ऑफ नाउ जो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको कौन सा डेटा अभी गुजरात के लिए अवेलेबल है, सो दैट इज बेसिकली जो अभी फ्लड हुआ था 15th तक अभी अवेलेबल है। तो इसका जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है, मतलब जो सेंटिनल का जो टेम्पोरल डेटा अवेलेबिलिटी जो दिखा रहा है, दैट इज 12 डेज का गैप दिखा रहा है, ठीक है। 12 डेज का गैप होता है। फर्स्ट जब डेटा आता है उसको अभी वो तो बाद में बताता हूँ, ठीक है। प्रिसिशन रेस्ट्रिक्टेड 2 रहता है, तो प्रिसिशन वाला जो होता है और रिस्ट्रिक्टेड वाला 2 फाइल रहता है। तो प्रिसिशन फाइल शायद आपको 3 दिन बाद मिलता है, और जो रिस्ट्रिक्टेड फाइल है वो 15 डेज के बाद मिलता है, ठीक है। तो फिर रिस्ट्रिक्टेड वाला फाइल जो होता है वो उसका जो एक्यूरेसी होता है, ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो वी विल रिकमेंड इट विद दैट, बट मुझे इमीडिएटली करना होता है, तो 15 डेज का बाद का डेटा मैं क्यों लूँगा। सो दैट्स वाई वी गो विथ दैट। मतलब वो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद 15 डेज नहीं होता है, डेटा जिस दिन अवेलेबिलिटी होता है उसके बाद, उसके 15 डेज बाद का उसका मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड फाइल है वो मिलता है। तो वो एक्चुअली ऑर्बिटल करेक्शंस के लिए यूज होता है। अब मैं ये सब टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज द प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस। मतलब आपको बेसिक प्रोसेस समझना है। दूसरा, सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में क्या होता है अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होता है, ठीक है। लेकिन मतलब उनको इसी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज होता है कि डाउनलोड करेंगे इमेज बिफोर और आफ्टर, 2 टाइम का। नेक्स्ट होता है सेंटिनल डेटा को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। सो GIS प्रो में एक अच्छी चीज क्या है कि रॉ डेटा भी डायरेक्टली ऑलमोस्ट ओपन हो जाता है और वो नियर बाई फाइल में सिट कर देता है, मतलब नियर बाई लोकेशन सिट करा देता है। लेकिन अब उसको देख के आपको वही करेक्ट फाइल है ऐसे उसके ऊपर काम करना नहीं चाहिए, तो उसका बहुत सारा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स उसके बाद रहता है। सो उसके लिए और एक डेटा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आफ्टर इंपोर्टिंग, दैट इज द डेम। ये डेम आपको 2 चीज के लिए चाहिए होगा, ट्रेनिंग फ्लैटनिंग के लिए और जो लोकेशनल ज्योमेट्रिकल करेक्शंस रहता है उसके लिए भी आपको ये जरूरी होगा। तो इसलिए एक सार इमेज जरूरत होता है। सो मैं तो आज ये 90 मीटर करके करूंगा तो रेजोल्यूशन पर थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन 30 मीटर रहता है तो इट विल बी गुड रिजल्ट्स। ओके, सो देन geocode this image using the SAR data. Once pre-processing is done, pre-processing में बहुत सारा कुछ हम लोग करेंगे, मोस्टली एक बार बता ही देता हूँ, टर्मिनोलॉजी थोड़ा बता देता हूँ। Okay, one minute. Yeah. So what we are going to do, that is, first is that I am downloading the orbital files. Then we are going to apply the orbit corrections. Then thermal noise corrections. Then apply the radiometric calibration. We'll go for the apply radiometric terrain flattening. Then we'll go the displaking. इसको बोलते हैं filtering, जो यहाँ पे दिख रहा है। Displaking के बाद the geometric transformations, टेरिन करेक्शंस जो यहाँ पे जियोकोडिंग इमेज बोल के लिखा हुआ है, एंड देन उसके बाद हम लोग करते हैं सार यूनिट में इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब लीनियर टू डी यहाँ पे करना पड़ता है आप GIS प्रो में। एंड उसके बाद वी हैव टू कम टू द क्रिएट कलर कंपोजिट, जो आप देख रहे हो कंपोजिट इमेज। आप इस कंपोजिट इमेज को एज ए टिफ में आप ले सकते हैं, IMG में लेना बेटर होता है, तो आपको थोड़ा सा कलर कंपोजिट के आइडिया लग जाता है। अब इसके ऊपर आप बिफोर का और आफ्टर का 2 कंपोजिट इमेज जनरेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो फॉर द पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक। सो ये सेम ही रहता है जो आपने सीखा था उस पे, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हो, रिक्लासिफिकेशन कर सकते हो, रास्टर टू वेक्टर कन्वर्शन कर सकते हो, देन एक्सट्रैक्ट द वाटर बॉडी और वाटर लेयर। ओके, वाटर लेयर को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो बिफोर फ्लड का, आफ्टर फ्लड का। सो इसमें क्या डिफरेंस रहता है अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में? उसमें आपका 1 to 4 आपने जो क्लासेस किया था उसमें 4 आपका वाटर था, इसमें क्या होगा उल्टा होगा, जो 1 होगा वो आपका वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट के हिसाब से वैल्यूज होता है, मतलब जो एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू होता है हाइट के हिसाब से होता है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो उल्टा है। तो इसीलिए जब आपको 2 इमेज हो जाएगा देन यू कैन गो विद दिस पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक। ओके, बट व्हाट वी लर्न
here today that is the pre-processing of the SAR data. ये यहाँ तक we will learn. और जो hands on करेंगे ये पूरा यहाँ तक करेंगे. ये processing का part है, pre-processing का part है. That we do, not the post-processing part. Okay? तो ये थोड़ा complicated है. But हम just know में easily तो हो जाता है. अगर आपको इतना knowledge की भी जरूरत नहीं है तो step follow करके भी आप कर सकते हैं. Okay? So that's we will try to teach you today. ठीक है, at least आप step follow करके भी करो. Now ये कुछ एग्जाम्पल है वो जो स्टडी एरिया का. ठीक है, तो ये स्टडी एरिया है कोलकाता का एंड सराउंडिंग का. बट ये इसका जो इफेक्ट था वो इस जगह पे जेट कोस्टल्स आर मोर अम्फान का. तो एक एग्जाम्पल है ये कॉम्पोजिट जो आप लोग बनाओगे अभी. ये बिफोर फ्लड का है और ये आफ्टर फ्लड का मुझे जो भी ब्लू यहाँ पे दिख रहा है दैट इज बेसिकली योर वाटर बॉडी बिफोर फ्लड आफ्टर फ्लड. ओके, सो ये इमेज हम लोग जनरेट करेंगे अभी गुजरात की, बट बिफोर फ्लड का जनरेट करेंगे. और 27 को जब डेटा आ जाएगा तब आप आफ्टर फ्लड का जनरेट करके वी विल ट्राई टू डू द क्लासिफिकेशन एक्सट्रैक्शंस ऑफ द फ्लड. ये बिफोर फ्लड साइक्लोन का इफेक्ट है और ये आफ्टर फ्लड का साइक्लोन का क्लासिफाइड. ये वो लेयर को एक्सट्रैक्ट किया था. इसमें एक चीज ये है कि मैंने ये वाला जो लेयर है इसको रख दिया है, इसको हटा देना है. जो मेजर वाटर बॉडी उसको हटा देना है. सो दिस इज द मोर फोकस्ड एरिया जहाँ पे साइक्लोन इज एक्चुअली इफेक्टेड. ये जो डॉट्स आपको दिख रहा है ये सारे पानी के बना हुआ है. ओके, सो ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है. ये सार्सकेप प्रोडक्ट्स के लिए जब सार्सकेप आप यूज करोगे उसमें फोकसिंग मॉड्यूल के लिए कौन सा सैटेलाइट से सपोर्ट करता है, गामा गॉसियन फिल्टर का यूज करते हैं. तो सार्सकेप इज बेसिकली एंड टोटली कैपेबल टू वर्क एनी टाइप्स ऑफ सार प्रोडक्ट्स. यहाँ पे जैसे क्या है ArcGIS Pro is only able to process the GRD product of Sentinel. अभी SNC प्रोडक्ट भी आप एनालिसिस नहीं कर सकते ArcGIS Pro में. ठीक है, सो ये लिमिटेशंस है. सो लेट्स नाउ वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू डाउनलोड दिस डेटा एंड देन वी कैन गो फॉर द प्रोसेस. ओके, तो ये पूरा एनालिसिस है जो मैंने आज डेटा को डाउनलोड करके ये प्रोसेस से ये जो वाटर बॉडी एक्सेप्ट. तो ये बिफोर फ्लड का डेटा. ओके, सो इन जनरल पहले जब रॉ डेटा आप देखोगे तो रॉ डेटा दिस इज द रॉ डेटा. ये आपके पास रॉ डेटा और ये है क्लासिफाइड कंपोजिट डेटा है. क्लासिफाइड कंपोजिट ये यहाँ तक आपको आना है. ये एक ज्योमेट्रिकली करेक्टेड इमेज. जो पहला इमेज आप देख रहे हो दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिकली करेक्टेड इमेज. ये जब मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा इट विल सी दिस इज शिफ्टेड बट दिस विल मैच ओवर विद योर बेस. तो इस प्रोसेस पे आने से पहले दिस इज कॉल्ड कलर कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सार कंपोजिट प्रोडक्ट्स. ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिट हम लोग बनाए कैसे. तो उससे पहले हम लोग जाते हैं, पहले इंटरनेट थोड़ा कनेक्ट कर लेते. सो पहले देखते हैं कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज मल्टीस्पेक्ट्रल. अब देखो मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाके ये ओपन किया. इसमें से मैंने डेट भी दे दिया है सर्च क्राइटेरिया. एंड देखिए 9/15/2023 से मैंने सर्च किया है 25 का. मुझे साइक्लोन आया था 16/17 को. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डेटा सेट्स आर अवेलेबल. सो दिस इज द डेटा एंड सी द कॉम्बिनेशन.
ये जो लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द पूरा क्लाउड। वी आर नॉट एबल टू सी अ सिंगल डेट। थोड़ा सा डेट को चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसको फर्स्ट से कर देते हैं। हम देखो 2-3 इमेज आए, ठीक है ना, ये है 12 को, भी क्लाउड है। अब नियर बाई डेट 12 का मैं आपको एक नियर बाई डेट 15 का सेंटिनल सार का निकाल, तब आप देखना डिफरेंस। तो ये जो क्लाउड है ये बहुत नेचुरल है। अभी ये अगस्त मंथ चल रहा है, सो यू विल गेट अ क्लाउड फॉर द मल्टीस्पेक्ट्रल। नाउ यू विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन दिस multispectral and the SAR. Okay, so let's open our SAR. तो मैं आपको पहले से कर देता। तो ये होता है SAR का जो वेबसाइट है, ओके, SAR का वेबसाइट है, इसको बोलते हैं skyhub.edu। इसमें ये होता है लॉगिन, पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है, यू कैन क्रिएट इट, एडिट योर प्रोफाइल, मतलब फॉर यू इट इज क्रिएट योर प्रोफाइल। सो क्रिएट योर प्रोफाइल। वंस द प्रोफाइल इज क्रिएटेड, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू लोकेट योर एरिया, कहाँ पे हुआ है। सो ये पैन बटन होता है, ये एक्टिवेटेड है, तो आपको पैन करना है। Suppose I want this Baruch area, ये जगह, ठीक है ना। So इसको यहाँ से you can download, ये रिवर पे आया है। So I want some swath which should cover this particular scene। अब इसमें बहुत ascending, descending, different मोड आता है, तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप का इमेजेस यहाँ पे देखने को देखिए। मैं जैसे अभी यहाँ पे क्राइटेरिया कैसे फिक्स करते हैं, सो ये हो गया। पहले इसको एक्टिवेट करके ये बॉक्स को मैं डाल दिया, सो मेरा स्टडी एरिया आई फिक्स्ड। नेक्स्ट इज यू हैव टू गो टू दिस, यहाँ पे सेंसिंग पीरियड बोलना मतलब डेट्स, जैसे वहाँ पे डेट्स था, यहाँ पे सेंसिंग पीरियड। तो मैं डाल देता हूँ 15 से आज का दिन, तो मुझे देखना है। और थोड़ा सा 10 से ले लो, 10 से 20। नेक्स्ट सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, तो इसमें 2 आता है, SSNNL 1A और 1B। तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो जो भी अवेलेबल है जिस सैटेलाइट पे 1A या 1B में, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। जो सिलेक्ट करना होता है दैट इज प्रोडक्ट टाइप। आपको कौन सा प्रोडक्ट टाइप चाहिए एग्जैक्ट। मुझे अभी यहाँ पे GIS, मैंने GIS, ठीक है। नेक्स्ट पोलराइजेशन, यहाँ पे देखिए सारे टाइप का पोलराइजेशन दिया हुआ है, बट व्हाट एवर द अवेलेबल पोलराइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट विल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट, तो मैं इसको भी छोड़ दूँ। नेक्स्ट होता है सेंसर मोड, ये मेंशन करना पड़ता है। मैंने चारों मोड आप लोगों को दिखा दिया, कौन कितना स्वाद यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने IDW यूज करना, इंटरफेरोमेट्रिक वाइड मोड, जो मेरा स्टडी है वो इससे कवर करेगा, ठीक है ना। सेम सैटेलाइट सीन्स को इससे कवर करेगा। नाउ स्वाद एरिया उसका बड़ा है। सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत है,
This is for multispectral image, but as of now this is actually not giving that. SSNNL2A is for multispectral. So Sentinel का SAR भी image है, Sentinel का multispectral image है. Okay, but two are different sensor, same satellites नहीं, both are अलग. ठीक है. ये होने के बाद criteria done, I will search for this. देखो वो डेट के रेंज से मेरे को तो एक ही मिला है, ये छोटा सा है. तो देखते हैं इसको, ये जो आई बार है इसको क्लिक करते हैं तो ये डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाएगा डेट, ये देखिए रेंज. ठीक है, 15 का एक ही डेटा, 25 पे सर्च किया मैंने 10 में, इस लोकेशन पे एक ही मिला. मैंने यहाँ पे जैसे आपको देखो मैं थोड़ा सा बड़ा एरिया लिया था, यहाँ से लिया था, तो यहाँ का भी 2 इमेज आ रहे, बट यहाँ का एक ही मिला, 2 डिफरेंट डेट. देखो एक कौन सा डेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 15 का जो अभी मैंने ओपन किया, सेम डेट है, और एक दूसरा डेट देखो. कौन सा डेट है? So ये थर्ड का डेट. So थर्ड और नेक्स्ट डेट उसी लोकेशन का मुझे कब मिल रहा है? 50. माइनस करने से कितना होता है? फर्दर कितना डेट होता है? हाँ 12 डेज. So 15 के बाद नेक्स्ट डेट कब आएगा? 27. So next पोस्ट प्लॉट का डेट मिलेगा आपको, वो 27 को, अब 2 दिन बाद. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इसको क्लिक करना है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये डेटा लेना है, जो अभी मैंने एनालिसिस किया है वहाँ पे, दैट इज ओवर दिस डेटा. सो इसको क्लिक करने से डेटा विल स्टार्ट डाउन. क्लियर? ठीक है. अब डेटा कैसे दिखते हैं मैं करता हूँ. मैंने एक डेटा डाउनलोड किया, यही वाला डेटा, ये डाउनलोड दिस इमेज, ये इमेज डाउनलोड किया है, अभी देखा है एनालिसिस करके. सो दैट इज बेसिकली ये. अच्छा ये डेटा है. ठीक है. अब डेटा कुछ ऐसा है, डाउनलोड के बाद आपको ये कॉम्प्रेस फाइल मिलेगा. ओके. तो 2 डेटा डाउनलोड करना होता है, एक ये चाहिए, दूसरा चाहिए ओपन टोपोग्राफिक मैप, मतलब एक गेम चाहिए, गेम वाला. ये मेरा एक चैनल है, यहाँ से आप देख लेना, ये तो मैं दे दूंगा. ये अभी चलो ये यहाँ पे डेटा है, मैं दे दूंगा. ये है ओपन टोपोग्राफी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डेटा गेम का, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया. ठीक है. अब जैसे ही आप जाओगे ना, जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे, मैं लिंक लेकर आपको दे दूंगा. इस पे जाके ये SRTM GL3 90 मीटर रेजोल्यूशन का ये मैंने डाउनलोड करने का कोशिश की, इसी से कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा रेजोल्यूशन क्वालिटी खराब हो जाएगा लास्ट में, बट इट्स ओके, मुझे जस्ट सीखने के लिए कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट रीजन होता है, कौन सा रीजन का देखना है आपको. तो बारूच थोड़ा सा करके तो बारूच का एरिया को सिलेक्ट में जाके कर ले. बारूच सिलेक्टेड हो गया. अभी यहाँ पे आपको ये डिटेल्स देना पड़ता है जो आप क्या करेंगे. दे दिया, अपना मेल आईडी दे दीजिए. ठीक है. करके
सबमिट कर। अब यहाँ पे वो डेटा सर्च करें। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाएगा ये नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आ गया। अब इसको क्लिक करने से ही डेटा स्टार्ट डाउनलोड। ठीक है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स फाइल में आएगा। दिस इज दिस फाइल, ये कॉम्प्लेक्स फाइल है। ये मैंने आज तो दे दूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब इससे करोगे तो ऐसे डाउनलोड करो। ठीक है, तो फर्स्ट इज जो माइक्रोवेव डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करो। जस्ट राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट कर दो। और एक प्रो ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम डेटा ओपन होने में ही टाइम लगेगा। जो कैलकुलेट जो भी करता है वो आपका मेरा सिस्टम में टाइम लगा, तो आपके सिस्टम में तो बहुत टाइम ले सकते। तो इसके अंदर क्या है, जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट किया ये वाला फाइल आया, तो इसको खोलते हैं। तो दिस इज अ मेन फाइल। इसका जो सपोर्टेड फाइल है आप GIS का, दैट इज mainfest.shift फाइल। ये होता है माइक्रोवेव का सपोर्टेड फाइल, mainfest.shift। ओके, अब ये जो डेटा है इसको मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आप ओपन करते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। टेस्ट सार बोल के मैं एक आउटपुट लोकेशन फिक्स कर देता हूँ। ओके, अभी मेरा डेटा एक्सपोर्ट भी हो गया है, जो MNCF वाला मेन फेज वाला। तो मैं इस पे डेटा ऐड में जाके, अच्छा चलो एक काम कर, पहले ये फोल्डर को कनेक्ट कर दो। Add to current map। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम when you are adding it, it will calculate the file, it will take time। क्योंकि ये मेरा भी सिस्टम स्लो हो गया, इतना डेटा हो गया है, मेरा सिस्टम स्लो हो गया। 32 GB रैम है, 32 स्लो हो गया है। थोड़ा सा बिल प्रोग्रामिंग करने में इसका टाइम लगेगा। तो once it is ready, पहले क्या होता था कि ये आप GIS डेस्कटॉप में आप पहले सार का कोई भी काम नहीं करता, प्रो पे भी नहीं करता। अभी ये क्या कर रहा है, वो उसी फाइल को लेके ऑलमोस्ट ठीक जगह पे बिठा के देता है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता, उसको ज्योमेट्री करेक्शन करना पड़ता है। तो ज्योमेट्री करेक्शन करने से पहले मैंने आपको अभी जो PPT में दिखा है, सार डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्री प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स, थोड़ा सा लंच लेट में जाएंगे हो सकता है।
सो ये आपका इमेज है, तो इसमें जो भी आपका ब्लैक एरिया दिख रहे हो, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पेक्युलर रिफ्लेक्शंस। ओके, द वाटर बॉडी इज लुकिंग लाइक दिस। ये कोई एफसीसी इमेज नहीं है कि जनरल थिंग बैंड को ऑटोमेटिक क्रिएट करके इसको देगा। इसमें हम लोग को मेन चीज करना होता है कि कंपोनेंट, यहाँ पे जो बैंड देख रहे हो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, VV और VH, और एक उसका जस्ट रिपीटेशन होता है, ठीक है, 2 बार VH दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बैंड्स को जनरेट करते नहीं है, हम लोग को यहाँ पे इंडिविजुअल्स को देखना पड़ता है, इंडिविजुअल्स बैंड्स को यहाँ पे ओपन करके, वो टेक्निक भी अभी हम लोग सीखेंगे इंडिविजुअल बैंड्स को कैसे करना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप जस्ट को जब भी ओपन करता है वो आपका 3 बैंड का कॉम्बिनेशन को ओपन करता है, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, इसमें आपको एक लॉगिन आईडी की जरूरत पड़ेगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आईडी पासवर्ड आप थोड़ा लिख लीजिए सब लोग, जब प्रोसेसिंग करेंगे तो आपके लिए जरूरी होगा। आईडी इज GNSS GUEST, पासवर्ड इज आल्सो GNSS GUEST। ये ऑर्बिट फाइल को करेक्शंस करने के लिए जरूरत होगा, सॉरी करेक्शन नहीं, ऑर्बिट फाइल डाउनलोड करने के लिए। लिख लिया सब लोग? SSGUEST। Done? Very good. So अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हम लोग को स्टार डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्री प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे स्टार एनालिटिक्स टूल कहाँ पे रहता है? पहला तो चीज आपका इंस्टॉलेशन में इमेज एनालिसिस इंस्टॉल रहना पड़ेगा, इमेज एनालिसिस का लाइसेंस रहना पड़ेगा, तभी आपका इसमें ये एनालिसिस के अंदर टूल बॉक्स के अंदर ये रहता है आपका। ओके, ये सिंपल का बच्चा रहता है। तो इसमें देखो ये पूरा प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, ये सारे स्टेप्स में हम लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, टोटल 9 स्टेप्स है, 1 2 3 4 8 9, ये 9 स्टेप में आपको जाना। ओके, फर्स्ट स्टेप डाउनलोडिंग द ऑर्बिटल फाइल। ओके, यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑर्बिटल फाइल करके दिया है। तो इसमें आपका क्या आएगा, इनपुट रडार में आपका जो भी मेनफेस्ट वाला जो फाइल है उसको एज ए इनपुट देना है। इसमें 2 चीज आता है ऑर्बिट टाइप में, एक सेंटिनल प्रिसाइज और एक होता है आपका सेंटिनल रेस्ट्रिक्टेड। ओके, सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कौन सा वाला 3 दिन पे होता है, कौन सा वाला 15 डेज में, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली सेंट्रल प्रिसाइज से ही हम लोग जाएंगे। तो एक में ऑर्बिट फाइल 3 डेज बाद जनरेट होता है, एक में ऑर्बिट फाइल क्रॉस होने के 15 डेज बाद जनरेट। तो 3 डेज वाला बोलता है क्योंकि 15 डेज वाला जो हुआ तो वो यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे फाइल मिसिंग दिखाएगा, तब पता चल जाएगा कि आपका गलत है, तो आप दूसरा वाला से स्टार्ट कीजिए। तो एनीवे यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल में जाके वही वाला आईडी पासवर्ड डालना है। क्या लिखा है, GNSS GIS। Okay, so let's run. अच्छा, सेंटिनल प्रिसाइज में कर लो है, तो रेस्ट्रिक्शन से कर से हो जाना चाहिए।
So it will take unit time to download. ठीक है, यहाँ सब शुरू हो गया। इस तरह से कुछ इमेज पे चेंजेस नहीं होगा। जहाँ पे आपका ये फाइल रखा हुआ है उसमें एक सपोर्टिंग फाइल ऑर्बिट फाइल डाउनलोड हो जाएगा जिस लोकेशन पर आपका वो डेटा है। सो वो बाय डिफॉल्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जो आपका अभी फाइल खुला हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग करेंगे उसमें ये इनपुट ले लेगा। अगर आप इस स्टेप को नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में का इनपुट नहीं जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग करते हैं दैट इज ऑर्बिट करेक्शन करते हैं। तो ER पे हम लोग ऑर्बिट फाइल को पहले डाउनलोड करते हैं, देन वी आर करेक्टिंग द अप्लाई ऑर्बिट करेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरा अप्लाई ऑर्बिट करेक्शंस का ऑप्शंस दिया हुआ है। So you need to click on this। अभी इनपुट में ये जो मेरे से फाइल है ये जो ऑर्बिटल फाइल डाउनलोड करके आता है उसके साथ लिंक है। तो मैं इसको जैसे ही दूंगा इट विल टेक एज इनपुट। ओके, सो नाउ आई कैन जस्ट रन इट। चलो रन करते हैं। Okay, so apply orbit corrections is also done over my image। अब अभी मेरा डेटा में ऑर्बिट फाइल है एंड ऑर्बिट फाइल को मैंने करेक्शंस भी कर दिया। अब इसमें मेन चीज जो होता है दैट इज इसमें कुछ नॉइज रहेगा। So what we will do, we will just trying to reduce the first level of noise, that is called thermal noise बोलते हैं इसको, thermal noise correction। तो usually वाटर के ऊपर ये ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, आप देखो वाटर के ऊपर बहुत सारा नॉइज पिक्सेल्स दिखेगा। जब हम लोग thermal noise इसको corrections को डाल देंगे, then we will get the information which will be little correct। Okay, तो अभी मैं रन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो बोलते हैं थर्मल नॉइज करेक्शन। ये रिमूव द थर्मल नॉइज। ओके, इसमें इनपुट आएगा आपका ये जो इमेज का। आप देखिए पोलराइजेशन एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे दो पोलराइज्ड इमेज है VV एंड VH। तो मुझे अगर आपको एक ही चाहिए तो यू कैन गो विथ वन। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ VV मुझे चाहिए, आई कैन गो विद दैट, बट एनीवे आई विल टेक बोथ सो दैट मैं आपको वेरिएशन दिखा पाऊँ दोनों इमेज में वेरिएशंस क्या है। ओके, सो लेट्स रन इट। Okay, so now ये जो इमेज बना है ये VV और VH दो डिफरेंट बैंड्स बना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको तीन इमेज कॉम्बिनेशन आ रहा है, सो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो इंडिविजुअल बैंड्स को कैसे ओपन करते हैं? यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो प्राइमरी सिंबोलॉजी दिख रहा है इसको चेंज करके स्ट्रेट सिंबोलॉजी में कन्वर्ट करना होता है। ओके, सो वंस यू डन दैट, यू सी दिस इज द VV इमेज।
Okay, and this is the VH image. So sorry, we are going to focus on the VH. And यहाँ पे अगर जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गामा को थोड़ा सा चेंज करते हैं. So I will give it as a 2. See, image clarity is increased. Okay, तो ये मेरा VH image है after correction. Okay, so अब ये before correction का image open करते हैं. ये इमेज को स्ट्रेच करते हैं. मैं VH को ओपन करते हैं. ठीक है, अब देखिए आफ्टर करेक्शन क्या होता है. समझ रहा है? आप यहाँ पे ठीक है, ये बिफोर करेक्शन का इमेज है और ये आफ्टर करेक्शन का इमेज. इसको बोलते हैं सॉर्ट एंड कीपर नॉइज. जब मैं पढ़ा रहा था पीपी में तो आप समझ रहा है क्या है. तो ये वाटर पे तो हम लोग अभी टारगेट ऑब्जेक्ट वाटर है. सो वी हैव टू गो विद दिस थर्मल नॉइज करेक्शन प्रोसेस. ओके, सो वी विल गो बैक टू the P process. So next step, अभी थर्मल नॉइज करेक्शन के बाद डेटा क्वालिटी इंक्रीज. नाउ I will do the radiometric calibration. अभी radiometric calibration स्टार्ट करें. So radiometric calibration is also kind of a correction process. तो radiometric issues रहता है, problem रहता है, तो उसको भी correction करो. So we will go back to okay. Now I am going to use radiometric calibration. ये होता है अप्लाई रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन. सो इसमें इनपुट आप ये वाला जो इमेज है सो दैट विल कम T and R. इसमें भी यू हैव टू गिव दिस बोथ. ओके, एंड जब बीटा नॉट भी है, सिग्मा नॉट भी है, गामा नॉट भी है. सो यू कैन से बट बैक स्टार्टिंग के लिए we will go calculate in the sigma naught, but बोर्ड में लास्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. As of now we can go with the beta naught. So let's run it. Okay, so
now apply after radiometric corrections also. You can see the same image stretched in VB, change it in VH, go with gamma, increase it. Okay, see the quality. So if there is flood, you will see this area. In the flooded image, you can very easily demarcate. You understand now how it is looking the water over this image? So if in case of any flood, as there is no cloud, you can very easily demarcate the flooded area. I will show you Delhi case studies I have. So once I will go with the steps, इसलिए मैं आज थोड़ा सा लेट करूँगा. Now the next process. So what we did the radiometric calibration. Now we are going to do the applied radiometric terrain flattening. So terrain में टाइप के रफनेस का जो इश्यूज रहता है उसको हम लोग terrain flattening से we are actually correcting it. So terrain flattening के लिए हम लोग को एक डेम की जरूरत होगा. So that डेम you are already downloaded. So ये डेम को थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ये मेरा डेम है. So let's see. डेम कहाँ से डाउनलोड किया? I already showed you. So we are going to apply now. Apply radiometric terrain flattening. I'm giving input first one, this one, calibrated file. देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है cal v0. So cal v0 means calibrated file. Calibrated file. Output data file, fine. Dem raster. So you can add that particular dem. Okay. So now you can go with both. Now let's run. So it will. You need to click on this apply geocode correction. Geode correction. Sorry. So let's. Okay. नेक्स्ट स्टेप करना था मैं भूल गया. एनवायरनमेंट में जाके सेल साइज को अकॉर्डिंग टू द इमेज करना था. तो डेम का क्वालिटी थोड़ा बिगड़ जाता है. इसमें 90 मीटर डेम है. एनीवे ठीक है, आपको सीखने के लिए कर रहे हैं. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और डेम के हिसाब से वो कैलकुलेट होगा. टाइम लगेगा थोड़ा सा.
ड्रोन का भी सेशन होगा, ठीक है? तो शायद सेकेंड हाफ में one person will come, who will fly the drone and capture the data, and then we will try to show how to process it. थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसके वाला बहुत बड़ा प्रोसेस कितना टाइम जाएगा? इस प्रोसेस का Okay, it's done. Wait. आ रहा है। So this is the how the image is looking like. Okay. So after the geometric terrain flattening, the changes which you found, that is basically whatever my depth area will be there, according to that much area only it will come. Okay, so your extra, so if you want to subset your area, so best way is to give the depth according to your substudy. So it will cut out. Okay, from that particular. Okay. So this is basically my geometric terrain flattening image. So here also you can change it if you want. Sketched. Okay. So over this image and make it to enter. So अभी ये थोड़ा टाइम लगता है भी आने में. So that is terrain flattening image. Now there is few more steps is required. There is pre-processing steps. अभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है? Desplitting करना पड़ता है. Okay, so what will you do the desplitting? Desplitting basically the filter. So filter ये क्या करेगा? अब जो ये roughness थोड़ा सा है इमेज पे, तो उसको रिड्यूस करेगा. अभी भी क्लीन हो रहा है. ओके, सो ये अभी आ रहा है, थोड़ा क्लीन होके आ रहा है.
Now we go to this one, geoprocessing tool. Now here we can go with the display. Now we have to give calibrated terrain corrected data for this input. Okay, so there is lot of different types of filter is actually available. Like rain filter is there, frost filter we are using for the vegetation or agriculture. Okay, so here I am going to use the leaf filter only. So simply run it and let's see. This white is seawater? Yes, now the sea water was actually removed because here we are using the dam. So because of the dam that is not coming over the sea, so the sea was not included in the sea. So automatically it will substitute that. So before the dam we are using, up to that the sea is also considered. But now sea was not included in the analysis. We mask it. क्या होता है masking हो गया है. तो इसमें टाइड्स का हाइट पता चल इससे नहीं होता, वो अल्टीमेटली इससे होता है. One of the factor which attributes to the flooding is the timing of the tides. The maximum tide was there, the high tide was there at the 3 a.m. and we released maximum water at 11 p.m. on 16. And the low tide was at 9 a.m. in the morning. Okay. So that part which has been attributed, basically the backwater effect of the sea is being observed about 40 kilometers from the that portion to the from the shore to the Bharuch port side. So what had happened is that due to the high tide, the water which has been released, that was not being subsumed into the sea. So that increases the flooding part, which has not been factored or not there been think about that part, basically. So when I was stuck up in the train on that day, so I checked up that part also. So from date and time data, I switch over to the what are the tides cycle is there. And from that I find out that this thing. That way at night I told them that this train will move post 12 p.m. only. And we exactly moved post 12 p.m. And the level also receded from 12.94 was the maximum water level at Golden Bridge. And then with the train passed, it was 11.75 meters. So these are the calculation everybody has to take into the consideration. I don't know whether the SSNNL is doing that or not. But gradually, this is also one of the important critical factors which has played a part. They have not factored till now, so they should. So after filtering, what the last process is required, that is the geometry corrections. Okay, so in the geometry corrections, we are basically removing whatever the shifting was coming and everything. So final stage, you have to do the new correction. Okay, so as of till now, this data set is not exactly much with that old notation. After the geometry corrections, it is nice. But the thing is, yes, here we are using here as a dam is 90 meter. So the resolution is actually going to reduce. That is what we will
Anyway, we will try to give the original maps one, but we already did terrain planning using the game. So it will automatically reduce the resolution. Okay, so this is detailed image. I understand the differences. See, it is a smoothing effect is there in the image. Understand? Okay, so this is little smoother than the before one. And that is what it is doing, the filtering. Make a smoothing effect over the now. So we will do the geometry correction. So I will go back to so we will go now geometry correction. Apply the geometry terrain correction. So here you have to give input of this your filtered image. And you select these two. So them you need to select. You have your them. Here in environment, cell size. That time this option was there. I am not doing for the training plan. Okay, so run. So during training planning only we have to give that cell size. Time I got so when you create the color composite, that time you will the final products. Now we will get EV, EH, final geometry corrected image. अब इस इमेज को हम लोगों को क्या करना पड़ता है? We have to convert in a linear to dB. Now we are calculating the value in dB. dB is basically वो backstep है. So वो dB में मतलब इसको बोलते हैं सारे यूनिट में कन्वर्ट होता है. Okay, so as of now it is a linear. So linear to unit में हम लोग अभी convert करेंगे, dB में convert करेंगे. So once we done that, then we will get the backstep value of that. Then the last steps we have to do the color composite. So color composite में अभी हम लोग different composition बनाएंगे. Like एक जब बनाएंगे PV, EH और एक बनाते हैं suppose PV minus B difference और एक होता है PV ratio B. दोनों में अलग-अलग informations
कलर जो कॉम्बिनेशन आएगा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा इमेज पे क्या डिफरेंसेस आ रहा है। लाइक फॉर फ्लड वीवी माइनस वी जो है, सो दैट विल गिव यू बेटर इंफॉर्मेशन देन रेशियो। कभी कभी किसी और स्टडी पे हम लोगों को रेशियो में ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन। ओके, तो वो कंपोजिट को once it will generate, then we can go for post processing. Start the DDI extraction. अब इसका ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, तो इसका और एक चीज होता है, अभी तो टाइम नहीं है, so that is using the model builder we can create this सेम प्रोसेस का मॉडल बुilder। तो मैं आपको एक वीडियो फाइल का दे दूंगा, तो वो वीडियो फाइल को देख के आप लोग बाद में पहले तो आप लोग ये जो प्रोसेसिंग है अभी लंच के बाद आने के बाद मैं डेटा दूंगा आपको, एक पीडीएफ फाइल देखिए आपको यू हैव टू रन द सेम प्रोसेस ओवर योर दिस इमेज। और अगर आप चाहते हो कि डाउनलोड करके करना है, दैट आल्सो यू कैन डू। ओके, सो दैट आल्सो यू कैन ओनली, बट डाउनलोड में टाइम लगेगा, सो बेटर यू टू गिव इस अ डाउनलोड। बट अब प्रोसेस करने के लिए मैं सभी का कॉपी कर दूंगा। तो पहले आपको पीडीएफ वाला स्टेप्स में पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो काम होगा दैट इज योर प्रोजेक्ट यूजिंग द सेम प्रोसेस ओवर द मॉडल्स। उसका भी वीडियो फाइल मैं दूंगा, वीडियो फाइल देख के आप कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा दोनों वर्क, देन यू विल बी एक्सपर्ट इन SAP। मैंने एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, मैंने इसमें थोड़ा सर्टिफिकेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक सर अभी हो रहा है। ओके डन। तो ये है आफ्टर ज्योमेट्री करेक्शन stretched VV so this is a gauge image after geometry correction। कितना आपका स्टडी है हुआ था आगे। ओके, सो नाउ फाइनल स्टेप linear to DB conversion, सॉरी मतलब सार यूनिट कन्वर्शन। So now we have to convert it to the SAR unit. Give the input here. See, this is a conversion linear to DB. Raster cell size. Yes. Here we have. Okay, so let's run.
Okay. So this is your image. Final image. Now one more step to create the composite. So here we have these two bands, VB and VH. It's already linear. So if you want to convert a third band, then you can go with the create color composite. Input you can give this one. Here the method you have to change the ID from here. You have to change it in a band names. So band names by default it is loaded. Okay, VB and VH. So suppose here it is a ratioing is by your type. But for flood, better is we can go with the subtractions, the differences. Okay. So environment, I will select the same. So let's see. Okay, so all this water body is coming as a blue after this person. Okay, so if it is a flooded, so you will see this area totally blue. So area which is outside of your river. So अभी जो 27 को जो इमेज आएगा, you have can you able to do the same process? आज प्रैक्टिकल इसके ऊपर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. So then you send me the screenshot in WhatsApp. I will see from Kolkata. But आपको आ जाएगा. At least यहाँ तक करना आ जाएगा. तो you don't need much work in SAP. So you doing most of the work is here. You can. Okay. The same output you see here which I created here. The same output only which we can get. Okay. Same output we get. So that is you can say of how to process the SAR data, and you see the same process you can perform over the model. Okay, so that is also your hand. So दोनों टेक्निक से होता है, तो दोनों टेक्निक को ही आपको हैंड्स ऑन के लिए मैंने दिया है. तो लंच के बाद आके उसको कॉपी करते हैं. Any questions? चलो
सी बैंक सी सैटेलाइट के जो सैटेलाइट को हम सोच डाउनलोड करने जा रहे हैं उसमें ही पता चल जाता है कौन सा सैटेलाइट डाउनलोड उसके नाम मतलब उसके नाम से तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या बैंड है उनको पहले वो जानना कौन सा सैटेलाइट में क्या बैंड है तभी तुम डाउनलोड करने लगेगा यहाँ पे भी नहीं देगा जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तुम्हें उसका नाम को सर्च करना है उसके वेबसाइट में जाकर देखना है कि इसका क्या क्या बैंड है तब जाके उसको डाउनलोड करना है पहले डाउनलोड में नहीं जाना Stacking, decoration, stacking, computation, staging, atmospheric correction technique, indices, also cluster, classification. ये अगर आप indices से classification कर रहे हो then जरूरत है अगर मुझे डायरेक्टली इमेज पे करना है then atmospheric correction के बाद डायरेक्टली मैं classification में जाता हाँ ऐसे cluster में जा सकता हूँ चंद्रमोहन सर ने मुझे मैसेज किया तो फ्री होकर कॉल करो मैसेज तो भी होना चाहिए हेलो आओ બે મિનિટ મારે મેલ કરવાનો છે ઓફિસમાં આવું જ પાછળ ઇવેલ્યુએશન કરવા બેઠા છે બોલો હિતેશભાઈ બોલો બોલો હલો हाँ अच्छा हाँ हाँ કઈ ના ના મેં નથી બનાવી એ પેલા ભાઈએ જ બનાવી કોન્ટ્રાક્ટર એવું છે ને આ હું તો હજી ટ્રેનિંગમાં છું ત્યાં નથી 10 દિવસ ગાંધીનગરથી હા હું ટ્રેનિંગમાં છું 10 દિવસથી હા એ क्या बोलते हैं એનસી સર્ટિફિકેટમાં બધું માહિતી છે તો હું એકતા ઉઠી નહીં કરે तो एग्जैक्टली वो मैच करेगा उसके साथ और यही इनपुट फ्लक्स के इमेज के साथ देखोगे देन यू कैन गेट एन आईडिया कंडीशन में क्या डिफरेंस है दिल्ली और हाँ ये दिल्ली का एनर्जी है ये दिल्ली का है जैसे ये हिमाचल का है ये दिल्ली का है ये दिल्ली का फ्लडेड जो एरिया है दिस इज द मोस्ट फ्लडेड एरिया ये था इसको प्लस करेंगे सॉरी टाइम ऑफ द फ्लड and these are the composite तो ऐसे आपको करना है हाँ
सो मैं आपको ये वाला डेटा भी देता हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि आप अपने डेटा से करना चाहते हो तो गुजरात का डेटा भी दे रहा हूँ। तो एक पीडीएफ फाइल दूंगा, मैं दिखा देता हूँ। Day-5। अच्छा, आपको करना है इस पीडीएफ में जो स्टेप्स है वो मैंने बना के रखा है। सो ही इज अ स्पेशलिस्ट इन SAP इन US। ही इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर आपको सीखना है तो आप ये डेटा के मतलब करना तो है आपको अभी डॉक्यूमेंट देख के, अगर याद है स्टेप्स देन वेल एंड गुड। ओके, तो आप अपने डेटा पे करो। अगर आपको डेटा याद नहीं है स्टेप्स, यू लर्न फ्रॉम दिस पीडीएफ, और उस पीडीएफ का जो डेटा है दैट इज दिस वन, प्रोसेस सेंट्रल सारमा। तो इसको भी आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करना है। तो जिनके पास स्टार्ट फाइल एक्सट्रैक्ट फाइल नहीं है तो किसी से एक्सट्रैक्ट करके अपने सिस्टम पे करें, ठीक है। और ये है मॉडल बिल्डर, मतलब पहला जो स्टेप्स है वो इस पे कंप्लीट करना है आपको। ये पीडीएफ देख के, ये आपका गुजरात का डेटा, ठीक है, हरोज का, ये मैंने डाउनलोड करके रखा है। और ये मॉडल बिल्डर का टेक्निक है। तो पहले आपको ये पीडीएफ का कंप्लीट करना है, उसके बाद सेम प्रोसेस। ओके, आई शोड इट इन मॉडल बिल्डर how you can do the same process. Morning everyone. So today So this is the process. Okay, कैसे बनाना है पूरा मॉडल। जैसे एक बार से you will get the output like this. Okay, so ये आपका प्रोजेक्ट है आज का। तो ये बाद में होगा, पहले जो प्रोसेस है वो देख के आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ये वाला। ओके, तो मैं सब कॉपी कर देता हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। ये अच्छा, इसमें आईडी पासवर्ड दिया हुआ है या सेटीएम डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी आपको मैं जो कॉम्प्लेक्स फाइल है वो भी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रोसेस डेटा, सो 1 2 3 4 5 6 और सारा मॉडल बिल्डर 7 डेटा सेट्स आई एम प्रोवाइडिंग यू। तो एसआरटीएम डेटा में एक्सपोर्टेड भी दिया, और अगर वो वाला आपको दिख नहीं रहा है, कोई फाइल मिसिंग दिखा रहा है, तो फिर से फ्रेशली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। वैसे मैं दे दे रहा हूँ क्योंकि वो छोटा फाइल है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फाइल है, इसको जानने में बहुत टाइम लगता है। तो
सो डाउनलोडिंग प्रोसेस सब लोगों ने अब तक ट्राई कर लिया होगा। डाउनलोड होने में तो टाइम लगेगा मतलब, बट एटलीस्ट प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया है। किसको समझ में नहीं आया डाउनलोडिंग प्रोसेस? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? रिजल्ट में नो फाउंड आ रहा है। अच्छा मैम क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नो प्रॉब्लम। अभी आओ। मैं एक डेटा डाउनलोड करने का ट्राई कर रही हूँ, उसमें ऑफलाइन दिख रहा है। हाँ वो आ सकता है, दैट इज व्हाट नेचुरल। बता दो कारण। अच्छा दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा वो जो ऑफलाइन वाला आता है तो क्या होता है, सैटेलाइट कुछ कुछ डेटा आपको ऑनलाइन मोड पे देता है और कुछ ऑफलाइन मोड पे। तो ऑफलाइन मोड का मतलब होता है कि उनके पास डेटा तो है बट वो QA चेक वो लोग नहीं करके रखे हैं, क्वालिटी एश्योर्ड नहीं है। तो अगर आपको ऑन डिमांड है तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है ऑफलाइन। तो वो रिक्वेस्ट भेज देने के बाद वो लोगों का एक मेल आपके पास आएगा बाद में, ठीक है। तो उसमें वो लोग वो लिंक सेंड कर देंगे। तो लेकिन वो कब करेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। सो ऑफलाइन मोड से आप डाउनलोड कर सकते हो बाद में उस लिंक से जो आपको मेल पे आएगा, ठीक है। जिस मेल से रजिस्टर किया है उसी मेल पे आएगा। और फिर भी नहीं आता है तो फिर से उनको उनका जो हेल्प सेंटर है उस पर मेल करके उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ये फर्दर प्रोसेस है। अभी 1 साल तक रहेगा रख रहा है तो उनका भी डेटा स्टोर में रेडी हो जाता है, तो इसलिए वो लोग हटा देते हैं। फिर रिक्वेस्ट ऑन डिमांड में वो देते हैं। हाँ क्या सर प्रॉब्लम आ रहा है? डॉक्टर जब आता है तभी हाँ मैम आपका क्या है बता कि आप मेरे सामने क्या क्राइटेरिया रहा है? डिसेंडिंग डाला आपने से डाला क्या? डिसेंडिंग बाय ऑर्डर आपने डाला है? हाँ ठीक है मतलब हाँ हाँ फर्स्ट में डालेंगे इसको बंद कीजिए पूरा क्राइटेरिया सेवन इसलिए नहीं आ रहा तब वो लॉन्च ही नहीं हुआ था सर। अच्छा देखो मैम ने साथ डाला है 2006 का, तो देखो ये चीज भी आपको जानना है कि सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ। अगर आपको पता नहीं है कि लॉन्च डेट कब है तो आप 1993 का भी सर्च करके डालोगे तो वो तो अनफॉर्म ही दिखाएगा। ये लॉन्च हुआ 2014 में, तो जो भी डेटा आपको मिलेगा 2014 के बाद ही मिलेगा, ठीक है। इससे पहले का डेटा सर्च करने से नहीं मिलेगा। इससे पहले के सर अगर करना हो तो कहाँ से कर सैटेलाइट आपको एक खुद का सैटेलाइट भेजना है, वो भी टाइम मशीन में जाके भेजना होगा। ठीक है
अलग है। हिली एरिया नहीं सकते हिमाचल साइन करना पड़ेगा, सब में साइन करना बिना साइन के नहीं होगा। एटलीस्ट ये सेशन के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि स्टार डेटा कैसे टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो जैसे छोटे छोटे चीज जो है ना, ये बहुत मायने रखता है। इसमें इंसिडेंट एंगल है, उसके बाद IDW मोड है, फिर आपके पास वो पोलराइजेशन है, ये सब के चीज के बारे में तो आपको जानना पड़ेगा। तो आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो आप इसके बारे में पढ़िए, तभी इसको प्रोसेसिंग कीजिए। और अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे आउटपुट से मतलब है, देन दिस मच प्रोसेस मतलब स्टेप आप याद रखिए, सो दैट इज क्वाइट एनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इमेज एनालिसिस चाहिए नहीं तो आपका ये नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग में लिए इमेज एनालिसिस इंस्टॉल होना जरूरी है। ये होता है ठीक है। आज मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे करते हो पूरा प्रोसेसिंग मेरे स्क्रीन पर। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं सुबह जी बोल रहा हूँ। ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ GIS का वहाँ पे संकित ने मेरा आपका नंबर दिया, जो उनका जो क्लाइंट का ट्रेनिंग होगा ना आपको पहुँचाना है। हेलो रखना तो कल है, कल का सेशन रखना है, कल होगा क्या? ठीक ठीक है, ठीक बता दो। ठीक है, मैं संकेत से बात
सब लोग डेटा कॉपी कर लिया? हाँ?
ये बंद हो गया ना, इसका मतलब वही है वही आपका प्रोसेसर 8 GB है ना, उसमें ऐसे हो सकता है। कुछ नहीं पड़ा है इसका हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है, एक का सर एक इसमें आपका हुआ मैम इंसर्ट हुई बट इधर तो आपका टाइम लेगा ये यहाँ पे है कौन सा स्टेप में हुआ है? हाँ हाँ उसको एक्चुअली ढूंढ ले ये आप पूरा एक बार बात करें जो मैंने दिया था अंदर होगा ना, ठीक है तो आप एक बार फिर से जिनका 8 GB है, जिनका नहीं हो रहा है, जो साइबर जिनके साथ हो रहा है उनके साथ बैठे, ठीक है एक साथ कीजिए फिर कंप्लीट कीजिए। आपका किसी का भी नहीं रन कर रहा है सर, आपका कर रहा है, हो रहा है ना 30 हाँ आप लोग का हो रहा है ना, आपका आप लोग किसी का हो रहा है
में क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है? हो गया ना, तो वही चीज में बोला कोई एक से तो होना ही चाहिए। हाँ हो जाता है, कभी कभी प्रिसाइज अगर सिलेक्ट करके रखा है उसमें नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डेटा फाइल जनरेट नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होता है तो वो तो जाएगा। तो मैंने टेस्ट करके फिर आपको दिया है डेटा, तो मेरा हुआ है तो आपका तो होना है। मैं दो बार टेस्ट किया ना, सुबह मॉर्निंग में टेस्ट किया, अभी आप लोगों ने सिखाया टेस्ट किया आपको वो आता है दूसरे में जाऊंगा। ठीक है, इसकी टेस्ट का शिफ्ट फाइल है ना, बस ठीक है। अब इसको प्रोसेस कीजिए, बहुत नॉइज है इसमें। चलो कोई बात नहीं, जब आप पेन डाउनलोड करोगे तो वो सी वाला पार्ट हट जाएगा ना, तो नॉइज कम हो जाएगा। करो प्रोसेस में जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें SRTM का अगर दो अलग जेब फाइल बनता है सर इसमें कोई टेंशन नहीं, वो जो मैंने जितना बड़ा सिलेक्ट करोगे वो एक साथ बुझाएगा भी कर नहीं मैंने 30 का मत इससे वो एक प्रोसेस आपने तो मैंने 90 का एक दिया है। 90 का तो डाउनलोड हाँ नहीं से जो मैंने दिखाया ना, जो ना डाउनलोड वहाँ से आप जितना बड़ा एरिया लोगे उतना बड़ा वो मोज़ेक किया है। 30 मीटर लोगे तो आपको फिर से मैनुअल मोज़ेक करना वो वाला फाइल करना चाहिए, बहुत सारा जैसे मैंने आपको अभी ओपन वाला दिखाया ना, वो कलर दिखा वो हम दूसरे को अलग वो तो दोनों में सेम प्रोसेस फॉलो करना है, क्लास में में जो कंपोजिट पढ़ा है ना, फिर कंपोजिट सिलेक्ट करके जस्ट और दोनों को सिलेक्ट करके इसका मोज़ेक और भी करेक्शन में क्या करेक्शन में क्या क्रैश हो रहा है? करेक्शन में आपका पूरा बंद हो जा रहा है। कितना जीबी रैम है? चलो डाउनलोड कर रैम कैसे डाउनलोड करें? रैम का सिस्टम ठीक ठाक है एकदम, मतलब SRTM का बात कर ले लो, मैं तो जनरेट हो ही नहीं। सर वो फाइल ही है, अगर जो साल का फाइल है वही है, वही इनपुट नहीं जा रहा है, 30 के बाद में आएगा। नहीं 16 जब लैपटॉप खरीदेंगे आप, अभी आप जान लीजिए कि मिनिमम 16 GB रैम का ही खरीदें, 8 GB मत खरीदें। क्या सर अभी फाइल ना हो रहा है तो आप दूसरे जगह पे कॉपी दोनों कर नहीं तब तो आपको इससे मतलब फोल्डर पे कॉपी करके फिर करना
बड़े साहब को मैंने हो जाए इसका प्रॉब्लम आ रहा है, इसको बंद कीजिए, जो एक्सट्रैक्ट किया है उसको कॉपी करके दूसरा फोल्डर में डाल दीजिए, फिर एक्सट्रैक्ट कीजिए। फिर पहले किससे रन किया था? नहीं, पहले किससे रन किया था? दूसरा वाले से सेकंड टाइम हाँ, एक तो अपनी जगह पे कॉपी कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, फिर से उसको प्रिसाइज पे रन कीजिए। पहले क्या सिलेक्ट करके रखा है इसमें? पहले प्रिसाइज किया था? श्योर? हाँ, पहले किया, पहले इसमें किया था, तो प्रिसाइज से करना। आपका सिस्टम क्या बोल रहे देखो 8वीं में चल रहा है, आप लोग 8वीं में क्यों नहीं चले? करो आप लोग स्टेप में कर रहे चौथी बार कर देगा। इससे क्या होगा? 3 बार हो गया ये और टैप कर ग्रुप स्टडी देना सर। नहीं, ये आप इंस्टॉल है, ये तो पहले आपका ऑटोमेशन नहीं है, आपको पहले डाउनलोड ऑटोमेशन करना है, तो आपको होना चाहिए ना, तो अपने आप अपलोड होगा, अपने आप अपलोड होगा ना, सक्सेसफुल व्यू दिखा है, तो एक फोल्डर में नहीं करा है, आपका डेटा कोई आला यहाँ पे आप स्टार्ट किया है, वहाँ पे आपको रन करना है, तभी वो होगा, नहीं तो आप दूसरे जगह फोल्डर सिलेक्ट करके अगर रन करोगे तो दूसरी जगह पे बैठ जाएगा, वो ऑर्बिटल आपको ऐसे नहीं दिखेगा, उसमें वो अपलोड होगा, ठीक है? तो वो उसका मतलब है आपका ऑर्बिट फाइल वहाँ से अपलोड नहीं होती, तो आप एक जगह पे फ्रेशली फोल्डर को डाल के अपना फाइल डाउनलोड करो, फिर कॉपी। देखो एक चीज पहले यार ये समझ लो, जो ऑर्बिट फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो वो आपका जिस फोल्डर पे ऑर्बिट फाइल डाउनलोड हो रहा है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है ऑर्बिट फाइल कलेक्शन, तो उसमें जैसे ही आप जो इमेज इनपुट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ऑर्बिट फाइल डाउनलोड हो जाएगा, सॉरी अपलोड हो जाएगा, तो इसीलिए आपको वही फोल्डर पे ही सब प्रोसेस करना है, एक ही फोल्डर पे सारे प्रोसेस करना है, अलग अलग जगह पे सेव करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? हाँ लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं दिया, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मैंने पीडीएफ दिया ना, सब रट्टा मारने से नहीं होगा, वो लिखने से नहीं होगा, आपको पीडीएफ खोलो, पीडीएफ खोल के आप देखो स्टेप में, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्यों कर रहे हैं वो स्टेप, इसलिए मैंने पीडीएफ दिया, नहीं तो मैं आपको जैसे मैं बता रहा था ये स्टेप करो वो स्टेप करो मैं बस बोल सकता था, लेकिन आपको मैं पीडीएफ दिया क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है क्यों स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्यों कर रहे हैं, और आप लोग जो लिखा है उस लिखने के बाद वो जो स्टेप्स है वैसे मत करो, वैसे करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा गलती कहाँ पे हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को अगर रिजल्ट भी नहीं चाहिए, लेकिन पीडीएफ को पढ़ो, वो जरूरी है।
एक बार पेज पर बोल दे तो पेन ड्राइव देखो नहीं मेरे ऊपर से डाउनलोड किया डाउनलोड किया सेंटर डाउनलोड किया
पढ़ो थोड़ा सा। अच्छा वो क्यों नहीं हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड और साइज में क्या लिखा है पढ़ा आपने? जो फाइल इसमें दो फाइल आता है स्टेटेड और एक मूविंग के बाद मूविंग के बाद तो उसमें ज्योमेट्री का ले सकता है लेकिन आप कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं उसका कैलिब्रेटेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन 15 डेज बाद देना है। हाँ फिर वो तो उसको लेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो और भी हाई है क्योंकि इसमें पिक्सल तो एग्जैक्टली नहीं आता है ना तो शिफ्टिंग का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है तो इसलिए एक्यूरेसी को एक्सेप्ट करने के लिए ये दोनों ऑप्शन है। ये मेरे को भी समझ में 1 महीना चला गया आप लोगों ने तो 10 मिनट में समझ गए। मेरे को तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है यहाँ पे जाके फिर मैं इसी में इसको यूएस में मेल किया तो मेल का 15 दिन बाद रिप्लाई आया फिर जाके मुझे पता चला कि ये फाइल का डिफरेंसेस क्या है। तो जब आप कोई भी नया सैटेलाइट को एक्सप्लोर करोगे ना तब उसमें देखना 2-3 महीना भी आ सकता है। प्रोसेसिंग में उसमें अलग कैलिब्रेशन जो वैल्यू है वो क्या है वो समझने में ही हम लोग को टाइम लगता है। एक बार जान लिया तो करने में इतना टाइम नहीं लगता। कोई एक सैटेलाइट का अगर आपने एक्सप्लोर किया है तो बाकी का आप कर लो। पानी का जाना और बर्फ ले जाना आपको वहाँ नहीं हुआ क्रैश उसमें एक ड्रॉप दे दो वो बर्फ में आपका भी क्रैश हो आपके पास वो है मैं वापस आपने तो इधर बैठ के गए वो भी अपन घूम के गए थे उसकी जगह सीधा ही आ जाना आपने देखा था ना अच्छा सब मतलब देख रहा हूँ स्टेज नहीं कर रहे मतलब बैंड जनरेशन नहीं कर रहे आप लोग मतलब सारे आपका देख लीजिए इसमें स्टेप में दिया हुआ है जो पीडीएफ मैंने दिया उसमें दिया है देखिए ब्लैक एंड व्हाइट जो मतलब सिंगल इमेज आपको कैसे देखना है अपने बैंड को तो कैसे देखना है वीवी बैंड और वीएच बैंड को कैसे देखना है। अच्छा वो आपको थर्मल नॉइज के बाद ही देखने को मिलेगा पहले थर्मल नॉइज का स्टेप अगर हो जाता है देन यू कैन डू दैट। धीरे धीरे कीजिए पीडीएफ को फॉलो कीजिए। कौन सा वाला कंप्लीट करा जी सर मतलब अभी कौन सा स्टेप में है कुछ ज्योमेट्री हो गया आपका चला गया मैट्रिक का कैलिब्रेशन करना है ना पहले उसके बाद फ्लैटनिंग करना है आपने थर्मल नॉइज कर दिया अप्लाई रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन हो गया देन अप्लाई रेडियोमेट्रिक क्लीयरिंग टाइम रेडी हो गया कैसे हो गया मतलब ये प्रोसेस डॉट शिफ्ट नहीं करता मिस करता जब शिफ्ट से नहीं है इन्हें ऐसा करने वाला है तो वो अभी फाइल का मिसिंग हो गया क्या कौन सा
आपने वो वाला निकाल लिया तो ये एकदम इसका तो समझ है मतलब एक्चुअली मैंने इसलिए किया जो पहले आप अपना पीडीएफ का एक बार प्रोसेस कर लिया हमें इसको आइडिया हो गया तब नेक्स्ट आपको करना था अब हाँ मैंने भी वही किया पहले इसको सीखा फिर मैंने एरिया पे अपने एरिया क्योंकि मैं अपना यहाँ पे डायरेक्ट करने जाऊँगा तो बहुत सारा चीज़ मुझे समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है ना जो मैंने इंस्ट्रक्शन फाइल आपको दिया है इसमें सारे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो उसको पढ़ने के टाइम मेरे को आइडिया हो कि अभी मेरे से क्वेरी यहाँ पे क्या यूज़ करना है क्या प्रोसेस होना चाहिए रेडियोमेट्रिक टेरेन में जो है डीएम रास्टर फिर से डालना पड़ेगा डीएम रास्टर फिर से डालना पड़ेगा उसमें एरर आपने वो सर दिया ना 30 मीटर वाला मैंने 90 तो नहीं आना चाहिए
सर आपने कौन सा ट्रैकिंग किया है या ज्योमेट्रिक करेक्शन? सेकेंड होगा अप्लाई और होगा थर्मल नॉइज, फिर होगा अप्लाई यूनिवर्सिटी कैलिब्रेशन, फिर होगा अप्लाई यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग फ्लैटली, उसके बाद आपको लिखा है ऑलरेडी आपने डाल दिया, तो 10:30 हो गया, आपको कैसे सोच रहे हैं सैटेलाइट जब पास होगा तब तो दूसरा सैटेलाइट में अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं है और कौन सा अवेलेबल है वो भी आपको जानना है, इस टाइम कौन सा पासेस हो रहा है वो भी आपको जानना है। अभी आप 15 दिन में एक बार अभी 12 दिन से एक बार 12 से नहीं अभी ये सब हो रहा है कंटिन्यूअस लाइन में पूरा करना है, 50 सैटेलाइट जैसे प्लानिंग कैसे काम करता है 200 सैटेलाइट को एक साथ कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो हर एक मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है, तो उसके वो डेटा क्लीनिंग नहीं होता है ना, उसका उसका वो कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस बहुत हाई हो जाता है, हो सकता है यही टेक्नोलॉजी हो रहा है, कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट प्लैनेट क्या था 50-200 सैटेलाइट पे एक साथ तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट हो रहा है 3 घंटे के अंदर इतना डेटा मिलेगा, और वो 3 मीटर रेजोल्यूशन बस। अब इनका भी प्रॉब्लम क्या होता है टेम्पोरल का, जहाँ दूर है ना, तो हमें एक जगह फोटो लिया घूम के आने में मुझे 2-3 दिन का डिफरेंस हो रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे 50 सैटेलाइट को लगा दिया
तो एक घूमेगा तो एक चला गया तो दूसरा सैटेलाइट उसका जगह ले लेगा, तो वो टाइम थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटे का डिफरेंस आएगा मैक्सिमम, ठीक है ना, 3 घंटा 4 घंटे का आपको डेटा मिलता है, फिर उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रेगुलर डेटा आ रहा है, तो आपको पूरा एपीआई स्टोर करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा डेटा ऐसा लगेगा। वो लोग वही कर रहे हैं, वो लोग क्लाउड में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो जितना हो सके डेटा स्टोर हो रहा है, और आपके पास एक बैकअप रहेगा कि कितना दिन तक आप बैकअप रख सकते हो, वो लोग वो एक्सेस भी आपको दे देंगे, अपना स्टडी एरिया का आप खुद का बैकअप रख सकते हो। सपोज आपने बोल दिया 3 महीने का मुझे स्टोर चाहिए, तो वो लोग 3 महीने कंटिन्यूअस आपके जगह पे फ्लाई कराएगा, डेटा कैप्चर करेगा और उसका एक्सेस आपको दे देगा, तो उसके हिसाब से वो दे विल चार्ज मनी। अभी तो इंडिया भी ऐसा कर रहा है, हाइपर सैटेलाइट का 50 सैटेलाइट पे कॉन्स्टलेशन वो भी एक प्राइवेट एजेंसी पिक्सेल्स बोल ठीक है, वो पॉइंट तो चेंज हो जाएगा ना सर हर बार, वही पॉइंट नहीं आएगा सर, वही पॉइंट चाहिए लोकेशन के हिसाब से। क्या हुआ, तो ये सैटेलाइट गया घूम गया, फिर दूसरा सैटेलाइट उसी जगह पे आया, उसी जगह का पिक्चर लेगा, लेकिन अर्थ तो रोटेट हो जाएगा ना, कहाँ रोटेट होगा, तो दूसरा सैटेलाइट जो आज जहाँ पे मूव हो रहा है सैटेलाइट भी तो मूव हो रहा है, वो भी तो कॉन्स्टलेशन ऐसा मूव करते रहेगा, क्या आज टिल्ट भी रहना है, तो टीम भी नहीं, वो टिल्ट भी रहना, वो तो सैटेलाइट के जगह पे पोल टू पोल मूव करेगा, नहीं तो 50 सैटेलाइट को मैंने एक ही जगह पे मैंने लगा दी, तो वो घूम के एक जगह एक सैटेलाइट की जगह पे घूम के दूसरे सैटेलाइट के सामने आना ही नहीं, तो या तो फॉरवर्ड वाला सैटेलाइट होगा या बैकवर्ड वाला सैटेलाइट होगा, कोई एक तो कैप्चर करेगा आपको, जो ये वाला सैटेलाइट अभी एक कैप्चर किया तो वो घूम गया, आज घूम गया, तो दूसरा वाला जो सैटेलाइट उधर है पोजीशन पे, तो वो उसका पिक्चर ले लेगा, आगे पीछे जो भी मूव करेगा वो उसका पिक्चर लेगा। हाँ हाँ वो आपको कोई भी एक जगह वाटर लेकर आएगा तो देखिए उसको पढ़िए, थर्मल नॉइज करेक्शन के बारे में लिखा है ना, तो थर्मल नॉइज बेसिकली अपने वाटर बॉडी को बोलते हैं, तो आप ये जगह को जूम करके देखिए बिफोर आफ्टर को हम करते हैं तो वही चीज़ बोलते हैं। गेम डाउनलोड किया, वेरी गुड, वो इंटरसेक्ट वाला ही बोलेगा, ठीक है, आप अभी प्रोसेस को कंटिन्यू करें। गुड, ऑल आर डूइंग गुड, हो गया आपका सर, वो कौन सा वो काम कर रहा है, अच्छा अपने और रेगुलेटरी ट्रीटमेंट, ओके गुड, इसका अभी तक आउटपुट जनरेट हुआ, अभी तक किसका नहीं हुआ, कौन सी स्टेप चल रहा है आपका, बहुत लोग इस पे वेरी गुड, मतलब लास्ट स्टेप से पहले दो स्टेप बाकी और मैम का कौन सा चल रहा है मैम, गेम ओके सही कर रहे हैं, अच्छा टाइम लगेगा 4 GB टाइम लगेगा, पहले इसमें देखा कि है
वो वाला कभी डाउनलोड करा है ना, तो फ्लैट वाला पहले देखो ना, उसमें फ्लैट दिख रहा है कि देखो तुम पहले करने का अगर दिख जाता है फ्लैट इसलिए तब तो दिखेगा ना, वाटर बॉडी से तो लार्ज एरिया दिखेगा ना, तब उसको हमेशा फ्लैट वाला पहले डाउनलोड करो। तो तुमको पता चलेगा कितना एक्सटेंड देखना है, तो उसके हिसाब से तुमको नेक्स्ट चेंज करो। मतलब इतना छोटा एरिया पूरा नागपुर का डाउनलोड, नागपुर का इसी हाँ दोनों का ज्योमेट्रिक एक्सटेंट सेम है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी आप जिस सपोज फ्लडेड इमेज को जितना आपका एक्सटेंट है, दूसरा वाला जो इमेज का आप डाउनलोड करोगे, दोनों का एक्सटेंट हमेशा सेम रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्टडी एरिया दूसरा टाइल्स में भी 80% आ रहा है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, और दूसरा वाला है दूसरा एक्सटेंट आपको, लेकिन आपका स्टडी एरिया आ रहा है, तो दो अलग अलग एक्सटेंट हो जाएगा, तो बहुत सारा प्री प्रोसेसिंग स्टेप आपको प्रॉब्लम में आएगा बाद में, इसीलिए दोनों का ज्योमेट्रिक एक्सटेंट सेम रहना चाहिए, ठीक है। तभी आप कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में फिर कंपैरिजन में डिफरेंसेस हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि अजीमुथ एंगल डिफरेंस हो जाता है, अगर आप हर एक मतलब डिफरेंट पाथ का ले रहे हो ना, तो इसलिए एरिया कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा।
इनको गलत सीन ऐसा सीन लेना है जो जो पूरा सिटी को नहीं दो ही सीन है तो इसको फिर एडजस्ट करना है तो एडजस्टमेंट सीन वाला एडजस्ट में फिर सिटी को अच्छा सब आ रहा है कुछ भी बात नहीं डाउनलोड करने के बाद जो फ्लड वाला है इसको डाउनलोड करके दिए अच्छा इसमें फ्लड हुआ है ना अभी वाटर स्टोर थे 24 तक वाटर स्टोर था तुमको पता है एक होता है फ्लड मतलब फ्लड आया पानी गिर के चला गया हाँ और एक होता है फ्लड जो होता है वाटर लॉक हो गया वाटर लॉक होगा तो तभी दिखेगा अगर फ्लड हो गया तुम जिस टाइम का ले रहे हो जिस टाइम सेटल कर रहे हो उस टाइम वाटर फ्लड में चला गया नॉट एबल पर सिटी में बहुत अच्छे से दिखता है हाँ तुम प्लानेट वाला है 24 वाला है इसको डाउनलोड करो और एक बार हो गया क्या प्रॉब्लम यही वाला ऐसा टीम नहीं कर वही वाला हाँ वही बाकी देखो ना यहाँ पे स्लोप लिखा है रामपुर लिखा है नीचे लिखा है ये सब नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ये चाहिए ऐसा टीम अच्छा जो कोई अच्छा आप लोग यूज करो ना आपको गेम चाहिए आप लोग गेम चाहिए गेम मिला आप लोगों को मैंने गेम दिया ना इसी एरिया का गेम दिया था ना हाँ और ठीक है ना क्या वो आप जाओ ना जाओ और बॉडी में से नहीं यहाँ से नहीं वो लास्ट स्टेप जो किया ये वाला लास्ट स्टेप राइट इसके अंदर
वो वाला करते हैं कंपोजिट इमेज किसका कंपोजिट इमेज जनरेट हुआ अभी तक? कंपोजिट जनरेट हुआ कौन सा स्टेप में? यूनिट कन्वर्शन तक हो गया, वेरी गुड। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आपका जितना भी है ना वो ऑटोमेटिक उतना ही है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आपका, ये तो सी वाला एरिया है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश करना कि आपका एरिया पूरा आ जाए। हाँ, और एक चीज़ होता है कि आपको पता है आपका स्टडी एरिया कितना है, तो हम उतना ही ड्यू ले। ठीक है, तो आपको सबसेट करने की जरूरत नहीं, वो सबसेट हो गया है। क्या हुआ, कौन सा कौन करना है सब डाउनलोडिंग ऑलरेडी फाइल आ गई सब कितना तक चला वो सेम जगह पे सेम फोल्डर पे क्लास स्टार्ट करोगे ना तो वो उसका सपोर्टिंग फाइल सब सेव हो जाता है। दूसरे जगह पे किया ना दूसरा फोल्डर पे अपने तो हो रहा है। प्रश्न एक बार देखो क्या हुआ, उसका प्रॉब्लम दुखी हो रहा है वो टेरेन पैकिंग इज द मोस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो लास्ट स्टेप है ना इसमें जो मतलब जब हम लोग यूनिट कन्वर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम ना वो आपको सिलेक्ट करना है पिक्सल, नहीं तो गड़बड़ हो। ठीक है, टेरेन पैकिंग में एक्चुअली करना था लेकिन इसका ऑप्शन नहीं आता है। जब यूनिट कन्वर्शन करेंगे ना उसमें हाँ सेल साइज को आपको मेंशन करना है, और नहीं करेंगे ना तो डिग्रेड हो। तो ऐसे भी मेरे को ना थोड़ा सा डिग्रेड ही लगता है जब 90 मीटर से करते हैं। हाँ हाँ नहीं, जितना आपका डेम है नहीं, आपको दोनों जियोमेट्री सेम होना चाहिए ना। जितना वो करता है क्या है कि आपका डेम ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दोनों का जो कॉमन एरिया होगा वो उसको ही लेगा। हाँ जरूरत नहीं, क्लिप इमेज को लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इमेज है ना वो ही डाल देंगे जितना अपन। हाँ लेकिन बहुत टाइम उसके लिए लग रहा है, थोड़ा हमें इसके लिए लग रहा है, मतलब ये जो इमेज है इसके लिए लग रहा है वो दोनों को फ्लैट पॉइंट करना। अब बड़ा इमेज में तो क्योंकि डेम का साइज कितना होता है 40 से मैक्सिमम, इसका साइज सबसे क्लिप देने की जरूरत नहीं, आप पूरा ही दे दीजिए। चाय का टाइम ओके, चाय पी लो, 10-15 मिनट ब्रेक। सब लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आप, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चाय टाइम हो गया, चल वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। आपको डबल चाहिए, डबल चार्ज देखो, 4 GB सिस्टम में आप लोगों से पहले कर लिया वो 8 GB है, 4 GB बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो तो प्रो ही नहीं चलता है 4 GB में। नहीं वेरी गुड, चलो
नाम जो इंग्लिश में इसे नाम हाँ ये अच्छा वो मैम ने जब डाउनलोड किया वो नीचे सब चेक ऑन कर दिया था इसीलिए आपके पास सब आया नहीं तो सिर्फ आपको वही इमेज आता बताने ना किसमें आएगा तो मैंने सब कुछ कर दिया नहीं क्यों पता नहीं चला आपको डेम करना है नहीं वो डेम तो कर ही दिया बस वही उसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट है आप डेम से वैसे सारे कैलकुलेट कर सकते हो ना डेम से कैलकुलेट हो ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है यही एडवांटेज हाँ इसमें सिर्फ वो डाउनलोड करना है जितना एक्सटेंड ले लो ना अपना चेक करने की जरूरत नहीं या तो अपना इंफॉर्मेशन से ठीक है नया लिंक आएगा क्लिक करो ट्रेन डाउनलोड अब देखो ये अपलोड या इस तरह से वो डेटा हाँ G1 या ना G3 लेना पड़ता G3 में या डाउनलोड ही नहीं हो गया फाइल वो मतलब इंटरनेट कनेक्शन से नहीं होगा इसलिए ऐसा ये तो डाउनलोड करो देखो तुमको दिखेगा रुक जाओ पहले खत्म होने दो पूरा खत्म होगा एकदम फोल्डर होकर आ जाएगा नहीं ये तो पुराना ये चल रहा है वो चलने दो ना उसके साथ ही ये लगा दोगे तो ऑटोमेटिक चलेगा डाउनलोड होगा ये छोटा फाइल है बस खाली मतलब तुम ऐसे ओपन करोगे तो तुमको ब्लैक ही दिखेगा तो क्या मैं जाके ओपन करो तो तुमको दिखेगा हाँ जाके ओपन करो आ गया सर कौन सा वाला स्टेप करना ओ नहीं आपने आपको ना छोटा चीज मत करना ये अपने टाइप क्या है ये फाइल कौन नीचे वाला मार्क है नीचे वाला ठीक है सर मतलब आउटपुट तो जनरेट हुआ बट रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है स्टेप्स तो ठीक है ये हमको से ठीक क्लियर हुआ बाकी वो दिया ना मैं कुछ पैरामीटर्स देने में आपने गलती किया तो आप कुछ सर जियोमेट्रिक पेरेंट प्रिंटिंग टाइम ले सकता है बहुत टाइम लगा बहुत टाइम प्रोसेस से इतना नहीं ले सकते ये दूसरा है चलो मैम कोई बात नहीं आप खाने से चाय पी के आओ तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा सर चाय के लिए जाना ही नहीं चल रहा है सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं हाँ प्रिसाइज में वही प्रॉब्लम हो रहा है ना आपको इसको चेंज करो देखो से डाउन हो रहा है तो आपको दूसरा फोल्डर में कॉपी करना है ये वाला फाइल को दोनों को एक्सट्रैक्ट करके फ्रेश बंद करके फिर स्टार्ट करो हाँ हो जाएगा चलो आगे पीछे कोई ऑटोमेटिक 125 डाउनलोड करेंगे आपका नाम तो खाली है खाली नहीं कोई आलो इमेज प्रोसेसिंग शुरू नहीं तो प्रॉपर होना चाहिए चार गेला सारा कंप्यूटर लिया पर ये तो केसेस के में तो 32 GB वाला की અને જ્યાં જ્યાં GIS ના માણસો બેસે ત્યાં ત્યાં એસીપી કરે આપણે
वजन है ना जहाँ मायने में वो छट जाओ ना चाहे आप ना हाँ उसी रोड पे कर ले चार तक का हमारा ना जीरो टका के आर्टिकल कैंसर तो क्या कर सकते हैं कैंसर भी प्रोसेस होता है कैंसर भी हार्डवेयर नहीं लगेगा अच्छा जिनका हो गया है वो मॉडल बिल्डर वाला स्टार्ट कर दीजिए। नहीं हो रहा है नहीं वो टाइम लगेगा। पेंडिंग हाँ हाँ आधे घंटे से नहीं वो डिपेंड करता है कैंसिल मत कीजिए वो चलने दीजिए उसको चार्ज मत कीजिए। अगर इसको चलने रेडी हो रहा है तो आप दूसरा वाला एक आप GIS को ऑन करके उस पर अपने वो मॉडल बिल्डर वाला स्टार्ट कर दीजिए। चलने दीजिए। क्या हो गया? ऐसा में तो उसमें एनवायरनमेंट हाँ एनवायरनमेंट में वो सेल साइज
कला ही दिखेगा वैसे हमें समझ में नहीं आता देखो इसको नहीं स्विच ऑफ कर दीजिए कौन सा ये हाँ फीचर वो कला ही आएगा जब तुम सबसेट करोगे ना एक बार चेंज हो जाएगा नहीं जरूरत नहीं गेम का चेंज नहीं गेम का कभी गेम का हम लोग ये काला लगेगा ना तुम इसको यूज करोगे सबसेट करोगे ना वो वाइट उस पेज पे डिपेंड करता है अभी तुमको समझ में नहीं आएगा इसमें वैल्यू क्लिक करो यहाँ पे ब्लैंक पे दिखा तुम कहीं और जगह हाइट डिपेंड करता है ना ईच पिक्सल इज डिपेंडिंग द हाइट तो तुमको जितना ब्लैक दिख रहा है दैट इज लो जितना ब्लैक दिख रहा है लो हाइट जितना राइट दिख रहा है वो वाइट पे क्लिक करो और इधर हाइट को जैसा इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट मीटर में इसको 1 मीटर 300 मीटर कम है मतलब जो ये हमारा जो हिल होता है 300 मीटर का हिल होता है 1000 मीटर मतलब एक बहुत बड़ा हिल मतलब छोटा जैसे सर्च भी अपना सर्च 1000 मीटर का होता है तो एवरेज कितना मीटर का पता है तो 8000 मीटर कितना 8000 मीटर से तो 1000 मीटर कम है क्या 300 मीटर 500 मीटर कम है क्या 500 जैसा हम लोग तो सारे 1000 मीटर का 182 मीटर कितना होता है वो जो बनाया है तुम इतना ऊपर गए सोचो कि उतना हाइट का पहाड़ हो गया तो कम है क्या वो 300 मीटर रियल एग्जाम्पल वो भी टॉप में नहीं मेरा सिस्टम प्रोसेसिंग चल रहा है कल बंद हो जाएगा
लेवल ऊपर नंबर नहीं होता है फिर मैं अपना लैपटॉप को जाकर फॉर्मेट देखना पड़ेगा यूजुअली ये जो डाटा था बहुत हाँ मैं इंटरेस्ट तो वही है इंटरेस्ट फाइल है ना इसका नाम डार्क जो ब्लैक है वो होता है एयरपोर्ट में पानी भर गया हुआ दो चीज़ होता है एयरपोर्ट का जो रोड होता है ना वो पूरा स्मूथ होता है ना और नहीं तो पानी अगर भर गया तो एग्जैक्टली अभी दूसरा वाला यूज ओपन होगा ना ये शैडो इंसिडेंट के इनसाइट्स इसके अंदर यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं
करना है तो सेकंड हाफ में करना है, फर्स्ट हाफ में मेरा तो मैंने बात तो बोल रहे तो कल वो नहीं शायद परसों बोल रहे हैं, परसों हो सकता है उसका इफेक्ट है, बट क्रॉस वेरिफिकेशन करना है ये तो मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे सारे एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, उसमें पानी भरा रहता है, वो भी रूम पर रख सकता है कि आसपास का एरिया ये कैसे करिए अंदर तो नहीं होगा, इसके बाहर है एग्जैक्ट वहाँ पे हो ही सकता है मतलब इरिगेशन के लिए अपनी पानी चेक ऑफ करके रखता है। इतना सारा यहाँ पे आप 10 मिनट करके भी चेक कर ग्रीन में तो ऐसे ही हुआ था, 5 मिनट हो गया है ना, ऊपर का जो पानी वहाँ पे कर के आसपास ही तुमको पता चलता है सारा। हो गया सबका फर्स्ट वाला कंपोजिट हो गया मैम, आपका कंपोजिट हो गया बस करना ही है इसको मॉडल को रन मत कर, बना के रखिए दोनों प्रोसेस है। पीछे बैकग्राउंड में रन हाँ होता है। उसमें कर रहे हैं मॉडल वाला बहुत टाइम मॉडल वाला क्यों बैकग्राउंड में होता है सर एकदम फास्ट सर सब सर कुछ का कर 16 GB है इसीलिए वो पास सर लैपटॉप है। इसीलिए सर फास्ट चल रहा है, मैं वही बोल सोच रहा हूँ सबका इतना सर का फास्ट लैपटॉप बहुत मस्त है। वेरी सर का पूरा एकदम स्लो हो गया। तो आप काम कीजिए आपका लाइसेंस नहीं है इसमें है, बट इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए तो इसमें अच्छा फिर वो फर्स्ट वाला हाँ बस बस वेरी गुड ठीक है। आपका स्टडी के ऊपर बना है नहीं मैंने नहीं बनाया। हाँ गोल्डन स्टेप तो करते हैं
हाँ अरे इसको लेना है तो इसको कल उसमें एनालिसिस में जाओ, हाँ फाइनेंस में जाओ, क्या पे सर्च करो फेवरेट प्रोजेक्ट पैकेज में सर्च करो, मैप्स को जाते ये फाइल है आपने वो डबल क्लिक करो तो अपना आप जस्ट प्रो देखो आप सारे वो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्लिक करना ये मैप तो ऑटोमेटिकली लिख हो गया ठीक है। हाँ बाकी क्या क्या लेयर चाहिए सभी वो आपको चेक आउट करते हैं, सब जगह तो बहुत टाइम लगेगा ये सारे जो भी फाइल्स हैं सर लास्ट वाले आउटपुट उसको एक्टिव डिस्प्ले किया था मैं आपको फिर से इसको जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा लास्ट वाला जो आउटपुट है राइट क्लिक वो इधर डिस्प्ले में आएगा ये नाम के लिए जस्ट एक्टिव डिस्प्ले करने से थी सब करता है प्राइवेट अभी रॉकेट भी डेवलप कर रहा है, फिर कैप्सूल मॉडल बना रहा है, फिर सैटेलाइट मॉडल बना रहा है, सेंसर मॉडल भी बना रहा है, डेटा कैप्चर भी कर रहा है, प्रोसेसिंग भी करने के लिए वाली कॉम्पोनेंट हो गए इससे जो काम अकेला कर सकता है तो ऑल आई हाँ सर
मॉडल मिल है कंपोजिट वाला ये सिर्फ आपने वो सेल साइज वाला दिया था जो सेल साइज मैंने बोला था वो एक्चुअली आपको जो फाइनल वाला साइज है उसको सेल जो मैक्सिमम वाला फ्रेम वाला लेता है तो क्वालिटी वाला सर आपका आउटपुट आ गया सर कंपोजिट जनरेट हो गया कंपोजिट जनरेट हो गया वाह वेरी गुड यहाँ पे गुजरात के लिए भी किया ना मैंने जो दिया था ना नागपुर का मॉडल पर आप सेव करके रख दीजिए अगर सक्सेसफुल हो गया तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ इसमें इनपुट डालना होगा ना बाकी सारे सेट हो गए आपके लिए 27 तारीख के लिए एकदम आपका रेडी है बस सिर्फ डालना ही तो मॉडल रेडी करके रख दीजिए 727 को डेटा आ जाएगा इसमें डाल दीजिए बस प्रोसेसिंग डन सिर्फ मॉडल को सेव कर देना क्लोज करने से पहले कोई टूल बॉक्स वो राइट क्लास प्रोडक्ट में जाके एक्टिव डिस्प्ले हाँ डाउनलोड नहीं कर डाउनलोड हो रहा है हाँ सेंट्रल प्रिसाइज कर रहे थे या सेंट्रल नहीं दोनों का नहीं होता है एक बार जैसे किया एक बार आपने रन कर दिया तो उस फोल्डर पे फिर से रन करेंगे तो एरर ही आएगा आप दूसरी जगह पे उसको एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर में डाल के फिर प्रिसाइज वाला रन क्या करने के बाद भी नहीं हो रहा है सर इस पे आओ मॉडल रन क्यों सेम प्रोजेक्ट में आप बार बार कर सकते हैं ना मुझे नहीं ये बस कर रहा है कौन सा बनाया
अभी चल रहा है ना? और मॉडल वाले तो बन गया बट इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हाँ हो गया। सर मॉडल में एरर आया नहीं आपने जो ऑफिस वाला फाइल ओपन किया है ना यहाँ पे उसमें आईडी पासवर्ड दिया था दिया था नहीं दिया तो उस टाइम मतलब हर बार मॉडल रन करते हुए कैसे ध्यान रहेगा ओके हर बार देता है हाँ हाँ फिर हुआ कैसे वही सेम है ये वो मॉडल के आपने एक बार रन कर दिया ना वो टेम्पररी फाइल दे देगा या तो सब मॉडल को पूरा फाइल एक बार कॉपी करके दूसरा मॉडल को कॉपी करके पेस्ट करके फिर एक बार पेस्ट किया नहीं तो पिक्चर बनना सर का सर क्या हो रहा है सर आ रहा है सर चालू है टाइम लग रहा है तो सर का सही चल रहा है सर मतलब सही सुनो तो पार्ट स्टेप्स आपने मिस्टेक किया है हो गया चलो एक मिनट में ऐसे किया था ऐसे किया था पहले बार ठीक है सर हम डिस्कशन करेंगे हाँ अभी सब वो दो बार किया है, तीसरी बार भी हो गया थोड़ा आपका नहीं हो रहा आपका नहीं हो रहा ठीक है मतलब होना चाहिए ठीक है मतलब प्रॉपर्ली आप करोगे आप चेक लेकिन सर का जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नहीं तो डेटा को प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है वो टाइम से कोई बात नहीं सर आप वो टाइम से जैसा हाँ हाँ नहीं वो तो वही लेगा ना अप्लाई ऑर्बिट करेक्शन जो मान वाला है वही तो लेगा ना अप्लाई ऑर्बिट करेक्शन हमने जब मैनुअली रन किया था तो आपने जब इनपुट डेटा दिया था आपने कुछ किया था याद है
वो ऑडिट फाइल तो उसके ऊपर ही आ रहा है ना, ठीक है ना, इसीलिए आपको वही वाला सिलेक्ट करना है, ट्यूब को सिलेक्ट करने से नहीं होगा, वो वन फाइल के ऊपर ही होता है, ठीक है, ओके करिए हो जाएगा। अब तो उसमें वो दिया था पासवर्ड, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो क्या ये जो मॉडल बन रहा है, हाँ हाँ ये जो वो ड्यूरेशन नहीं नहीं वो उस पे वो दिखा रहा है, ठीक है, वो ऑडिट फाइल में वही आई है। तो मतलब वो ये जो रूटीन सेम ही हाँ सेम है, ठीक है, मैंने 2-3 बार रन किया ना तो इसलिए वो वहाँ पे जॉब टू है वो रिमूव हो गया। हमारे फर्स्ट टाइम पर उसको मत फॉलो करो आप, सिर्फ मतलब जो आपने किया ना थोड़ा सा वो सोचो, ठीक है, तब आपको कोरिलेट कर पाओ चीज़, इसलिए मैंने वो पहले कराया, इसलिए बाद उसके करा रहा हूँ। कैश कर रहा है बार बार दो-तीन बार खास कर रहा हूँ वो फाइल भी फाइल था ना और होना नहीं चाहिए वो करना सिस्टम क्या आपने क्या तुमको आईटी हमारे पास सब रहता है मेरे को लग नहीं पड़ता है अभी बोलना डेटा तुम बोलना है तो फिर कुछ बोलो, मैं आपको सुपरवाइजर को बोलो मेल लिखो फिर वो कर दे मेरे साथ तुम क्लाइंट साइड पे जा रहे हो डेटा ला चाहिए, हाँ तो क्लाइंट साइड पे तो चाहिए ही चाहिए। नहीं आपको अप्रूवल लेना है, उसका एक अलग से अप्रूवल होता है, मैंने 3-3 महीने में एक्सटेंड करता हूँ ना, हर 3 महीने में एक्सटेंड करता हूँ। हाँ ये जो मेरा जो ये है ना और उसके ऊपर सीधा हम लोगों के पास जाता है आपको, हाँ फिर हर 3 महीने में एक्सटेंड करता हूँ। क्योंकि मेरा काम ही तो क्लाइंट साइड में क्लाइंट डेटा लेके काम करना है, तो हम लोग का क्लाइंट डेटा लेना है ना, तो तुम उसका ब्लॉक रहेगा तुम करोगे कैसे? पहले एक बार इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मीटिंग हुआ था, जैसे चल रहे थे, फिर उसके बाद बोला था जैसे तो करना मुश्किल है, सब जगह पे ऑन डायरेक्ट एक्सेस थोड़ी है हमारे, यहाँ ऑन डायरेक्ट खुलेगा तो डेटा कहाँ से मिलेगा, गूगल ड्राइव में करेंगे तो वो सेफ थोड़ी है, गूगल ड्राइव में डेटा टाइप का डेटा मॉडल में प्रॉब्लम है कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ये वर्जन पे कुछ नहीं होते
और एक ये वाला देखो जो कन्वर्जन का हाईलाइट किया था कि ये जो है ऑप्शन बताता है और एक चीज और ये जो हमारे पास था इसमें हमने डाल दिया यहाँ पे किसी वक्त ये प्रो नहीं है क्योंकि अभी तो हमारा तो ये तो बना नहीं है मशीन का वो जहाँ वो डाउनलोड कर सके। अब उसके बाद क्या ऑप्शन है? अच्छा उसका कोई तरीका बताओ तुम कहाँ से घर पर जाओगे आगे मैं तो 100 लोगों में डलवाना है मैं क्या तुमको आ जाएगा 100 लोगों को भेजूँ ठीक है एक बार आप हाँ तो बताना मेरे को मैं डालते भी करा दो हमारे और एक टीचर है कल बोलो इसको और हमारे यहाँ जो अभी जो आपने हैंडवर्क किया है वो भी मिलता है ठीक है तो ये कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट वाला रिटर्न स्लैश टीचर वाला किया जिसको देखो बताता है फ्रेश मॉडल ठीक है हो सकता है कभी कभी मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन बार-बार हमें सोचना है कि क्या से इसको डालना है प्रो का डाल चाहिए मैं तो कैसे डाउनलोड करके डाल तो दूसरा वाला का सारे पर तो सेम जगह पे होगा तो पता चलेगा कि मॉडल हां मेन मॉडल अभी थर्मल नॉइस पे एक काम करो मुझे वाला इस पे टाइप करो कौन सा वाला? ये मुझे वाला दिया ना हाँ मैंने ये भरूच वाले डेटा भी किया था रैम का जो डेटा था आपके वाले डेटा भी नहीं किया था जो भरूच वाला डेटा हाँ भरूच वाला डेटा क्योंकि आपको वैसे तो वो तो रन ही नहीं हो रहा था ना मुझे था मैंने वो लिया ही नहीं था मैंने इससे देखना पड़ेगा मॉडल में कुछ इशू आ रहा है क्योंकि पहले से वो फाइल इशू आ रहा था तो मैंने इसलिए किया था मेरा वीडियो कैसे बनाया मेरा वीडियो में ये जो फंक्शन आ रहा है आपका ये काम कर रहा है कनेक्शन सारे सही आ रहे हैं नॉर्मल नहीं उनका नॉर्मल नहीं हो रहा मैं वही देख मैं सोचा कि दूसरा जगह पे टाइप करते हैं मैंने फिर इसको लिखा और बिट करेक्शन के बाद जो आएगा आउटपुट वो हम थर्मल नॉइस का इनपुट लेंगे अब उस पे आपको करना है ना उसमें आपको जो हाँ उस पे बन गया ये बस नहीं ये जियोमेट्री ये पैरेलल चार्ट में ये बहुत टाइम लेगा तो मैंने वो शुरू कर दिया ठीक है नहीं देंगे काम करना है प्रोसेस काम से ये जियोमेट्री कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये थर्मल नॉइस वाला ये आपका होगा इसलिए उस पे मॉडल कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आपका फोन पता है सक्सेसफुली सर चल रहा है और स्लैश पॉइंट और इस पे भी चल रहा है सर का अगर सही हो रहा है मतलब तो डेटा तो सही है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक का डेटा सही है और बाकी का सही हो जाए तो मतलब उस स्टेप में आपको करना उसका कुछ स्टेप क्या हुआ सर जी सर आप वीडियो देखिए तो कैसा हो रहा है मैंने कुछ नहीं देखा नहीं वो आपने खुद से बनाया वेरी तो सर को कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे मॉडल को जोड़ा वो स्टेप से मतलब चार करेक्शन स्टेप बाय स्टेप ऐड ये रेफरेंस के लिए अगर जो अपने स्टेप कर रहे हो ना जो मैनुअली वही एक बार ऐसे नया मॉडल बना के ट्राई करती हूँ हां तो जो डेटा के वो सारे स्टेप मॉडल का फिर सर मैंने पूरी फाइल ही नहीं ओपन की पूरा आज पूरा मैप
उसमें दूसरा मैम नहीं थे एक्चुअली फाइल ही नहीं ऊपर की क्योंकि वो पैरेलल चल रहा था ना तो वो कभी नहीं दे रहा था तो शायद वो जियो हिस्ट्री में नहीं आई थी टेस्ट ले जाओ। ठीक ठीक। चलो आप लोग समझ गए कि आपको पता है कौन सा जीएसटी में आएगा नहीं आएगा। मैम क्या इशू है मैम? चल रहा है कंपोजिट में? मैंने वो लैब में करा ठीक है जितना ये आपका मेजर है ठीक है जो भी आया बहुत है मतलब इधर ही आना चाहिए ठीक है अगर मुझे नहीं चाहिए ना तो आई नॉट माइंड एरिया ऑब्जेक्टिव तो जितना एरिया मेरा ऑब्जेक्टिव है उतना एरिया में डाल दूंगा तो काट के वो ही आ जाएगा दोनों का कॉमन एरिया आएगा टेम का और उसका तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी लैब में इमेज डालने के बाद जो हम करेक्शन कर रहे हैं हाँ तो उसमें एनवायरनमेंट में ये सेट डिफॉल्ट एक्सटेंड डिफॉल्ट एक्सटेंड क्यों करना है डेम से जितना मेरा डेम ले रहा हूँ वो डिफॉल्ट उतना ही लेगा उसके बाद भी अगर आपके पास कोई शेप फाइल है नहीं आपको वो शेप फाइल देके काटना है देन उसमें आप डिफॉल्ट एक्सटेंड में जाके वो शेप फाइल ये साथ का यूज अपन अभी क्रॉप उसके लिए कर रहे हैं कर सकते हैं ना तो डेटा रेडी होता है और बात ठीक हुआ तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ओके एमएनसीएफसी कर रहा है हाँ खरीद के लिए खरीद के लिए ऐसे नहीं करते सर उसका अलग सा प्रोसेस होता है क्रॉप इंस्ट्रक्शन कैरी फॉर्म का अलग से अलग हर एक क्रॉप के लिए वो अलग सा तो मॉडल बनाया गया है फसल का आप देख सकते हैं हाँ देखा फसल को मैंने पीछे पढ़ा कर लिए मैडम कल देखता हूँ कल नहीं तो कल को हो जाएगा मैंने भेज दिया है इसको उनका नहीं आ रहा है सर हाँ I send it to him. वो जीपीए कैसे क्लासिफाई फाइल बनाते हैं उस दिन मैंने दिखाया था ऑलरेडी कैसे सैंपल करेगा वही चीज उस पे उसको डाल के सैंपल क्या कॉन्फ़िगरेशन में वन आएगा आप ये करके देखो वो वन से अप्लाई करेक्शन नहीं ऑर्बिट फाइल में हमने वो किया ना वो वन के ऊपर ही आएगा मैनुअली अपने किया था मैनुअली किया हमने यहाँ पे जो इनपुट था उसमें सेकंड इनपुट कोई जनरेट हुआ था नहीं हुआ वो एक ही था तो यही चीज हाँ ओवर टाइम का नहीं हुआ वो 3 बार उससे पहले आप इससे वीडियो ट्रेस मारते सॉफ्टवेयर
दोनों का उसका भी जितेश का भी ऐसा ही प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम इतना हेवी डेटा प्रोसेस करने में इशू होता है इसलिए चैलेंज जरूरत मेरा ऐसा कोई नहीं काफी बोलना नहीं चाहिए मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है 600-700 GB रैम किया हाँ वैलिडेट कौन सा ज़्यादा में तो उन्होंने आगे छोड़ा वो इसकी वजह से गलती उसकी काम पे लगा बहुत लोग एरर हो गया काम नहीं हो गया काम पे लगा के उठ जाता है उनका पहले से पास कर दिया यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है पासवर्ड आईडी नहीं मिल रहा है पासवर्ड आईडी कमल मास्टर दिया फंक्शन चल छोड़ दो कोई बात कमल मास्टर नहीं आपका वैलिडेट का हो सकता है ठीक है वो आपका मॉडल का प्रोसेस देख सकता है लिंकिंग में कोई एरर में कभी भी एरर चल रहा है आपने पासवर्ड दिया फिर भी आ रहा है मॉडल ये प्रॉब्लम कुछ इशू आया है देख रहा हूँ कि सबका दो तीन लोगों का ही सरकार जब मॉडल से रन कर रहे हैं ना कुछ मैंने जो मॉडल बनाया है उसको देख के जब मॉडल बना रहे हैं तो शायद मेरा जो इनपुट है कुछ अलग हो रहा है जो यहाँ पे मैच नहीं किया तो मैंने दूसरा जगह पे ये किया था शायद उस पर कुछ गड़बड़ हुआ सर ने मेरा मॉडल मेरी बिना देख से बनाया है मॉडल तो सर का मॉडल रन हो मतलब सही प्रोसेस में गया ठीक है एनीवे जस्ट इट इज अ गिविंग आइडिया आप बाद में भी इसको ट्राई करके देखिए अच्छा लास्ट के आउटपुट देखना है थोड़ा आउटपुट आ जाए ये लैपटॉप किस का नहीं रखते हैं हिसाब से आपका नहीं बहुत सरल तो मेरा मॉडल जो है शायद उससे कुछ डिफरेंस हो रहा है देखना पड़ेगा लेकिन सरकार राम के ने मेथड को फॉलो किया तो मॉडल रन हो गया तो वहाँ पे कुछ इशू है मतलब अभी आप कॉन्फिडेंस हो कर पाओगे ना डेटा डाउनलोड करके यह कैसे प्री प्रोसेस करना है इतना तो आपको आ रहा है मॉडल बिल्डर आपका काम थोड़ा सा इजी कर है अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर लिया ठीक है लेकिन प्री प्रोसेसिंग तो सबने को नहीं किया सबने कंपोजिट जनरेट किया ओके सो ऑल यू जनरेटेड द कंपोजिट सो दैट इज द गुड थिंग तो अगर आप मॉडल बिल्डर को थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कुछ ना कुछ स्टेप में प्रॉब्लम तो आप लोग मेरा वीडियो देख कर रहे हो तो मेरा जो प्रोसेस किया है अपने डेटा के हिसाब से किया है तो आपका डेटा में शायद कुछ इशू हो रहा है वो भी मेरे को भी चेक करना पड़ेगा बट ओके इफ यू डोंट यूजिंग द मॉडल
by using the composite also you can start doing the classification and other water extraction जो भी आपको करना है. Okay. So now you are confident. डेटा कैसे डाउनलोड होता है ये आपको पता है. डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके कैसे प्रोसेस करते हैं ये also होता है. तो मल्टीस्पेक्ट्रल में भी आपने सीख लिया और सार डेटा में भी आपने काम करने से बहुत ही गर्मी लगा इसलिए इसी बंद हो गया. हाँ इसी बंद ये चल रहा है वो बंद हो गया. हाँ ना इतना गर्मी लगा है मैं मेरे को हाथ बोलता हूँ. ठीक है मैम हाँ सर वो मैं उसमें फाइल सेव नहीं की. हाँ एक है ना वो गेम का मेन चीज होता है वैल्यू. हाँ सारे वैल्यू सब में ये फाइल है. ये तीनों मतलब प्रोसेस से डेटा मिल सकता है ऑटोमेशन में.
है ना, वो इंटरवेंशन का तब तो प्रोसेस की डिस्कशन करना है, तो नेक्स्ट से स्टार्ट होगा ना सर, ये डिस्कशन होगा। आउटपुट नहीं आया तो राइट क्लिक वो कीजिए एक्टिव ये आपका गलत है, ये आपका सही है। मॉडल से सर का रिजल्ट सही है, उल्टा हो गया। सर का कॉम्पोजिट का रिजल्ट गलत आया, सबका कॉम्पोजिट का सही है, और सबका मॉडल में गलत आया, सर का मॉडल सही है। परफेक्ट आया। ये मॉडल से सेव करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हाँ ये सेव करके रखिए। ऐसे सेव करना है सर, बंद मत कीजिए। डेवलप मैथ में जाते डेवलप ये टूल बॉक्स प्रोजेक्ट अंदर स्टार्ट मॉडल तो आप लोगों का आज रात का टास्क है, किसका मॉडल रन होता है। तो सर का रन हुआ है, मतलब आप लोगों का भी रन होगा। GIS क्रश एक तो आज भी ऊपर से दो तो GIS का क्या कसूर। वो रन करके उतनी देर करता है तो दूसरा चालू कर दे। पहले इसको मॉडल को रन हो जाए। ये वाला है, ये वाला वो नहीं मोटर तो इसमें से कौन सा लेगा। ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो कोई रम नहीं है मॉडल में हालत चला गया। हाँ क्लास कौन सा चला, बढ़िया सेकंड रिजल्ट आ गया। वन कौन बोला नहीं चलेगा मॉडल, सेकंड विनर मॉडल में।
ये लोग क्या बोले ऑपोजिट तो वाला है ना एक रिजल्ट आना चाहिए सर का जैसे कोई बात नहीं सर आपने प्रोसेस तो देखा दैट इज क्या वीडियो नहीं बोल रहा दूसरा नंबर से ज्वाइन हो सकता है कंफर्मेशन राइट हमने यहाँ रन किया था अब वो वेरीफाई कर सकते हैं बाद में इतना ज़्यादा नहीं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को शेप कर दीजिए देखा हुआ है मैंने कल बोला ना कि उस दिन वो जो WCT को डेटा निकालना पेमेंट अगर प्रोजेक्ट में तो नहीं होती लेकिन इनका जो कैड वाला है वो प्रोजेक्टेड में दिया हुआ तो प्रोजेक्टेड में करेंगे तो कभी मैंने बोला था कि एक फाइल क्या नाम था उसका? उसको जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट में सेव करके फिर डालना क्योंकि उनके जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट में अगर सेव कर दिया हाँ उसी बात है
रेफरेंस चाहिए वो क्या भाई पीडीएफ के रख और सेव कर वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार जियोग्राफी कॉलेज में डालना। हाँ जियोग्राफी कॉलेज ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। के बाद हाँ, एक बार मैं वही बोला था, कल एक डिस्कशन हुआ था, तो मैंने बोला ना एक बार जियोग्राफी कॉलेज में डाल के फिर एक आरकेएस हाँ। वो जो सर थे ना, गोरख सर, वो बोला था ना करेंगे एक फाइल का इसे कैट फाइल है, इनके पास से कैट होगा। कौन है मैम? कैट है आपके पास? कैट है तो कैट में ना जो फाइल है ना, उसको जब सेव कर रहे हो जियोग्राफी कोऑर्डिनेट में सेव करो, प्रोजेक्शन में मत दो, ठीक है? ओनली जो डेटा 24 है सिर्फ ये देखे सेव करो। हाँ, फिर वो फाइल को आप जीएस प्रो में तब बैठना चाहिए, ठीक है? एक बार करके, क्योंकि वो हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और एक बार बैठ जाएगा। भाई उसका सॉल्यूशन तो निकालना ही है, नहीं तो सर टास्क है। दूसरा ऑप्शन है सारे जितने भी इसलिए के धुरंधर हैं वो सब इसे धुरंधर कर दे सर, सारे प्रोसेस को ऑनेस्ट देखो ऐसा है। नाउ देयर इज अ टू वे टू डू द थिंग्स। फर्स्ट ये है कि सब मिलकर दिमाग मार कर उसको कंप्लीट करें, ताकि वो 4 महीने तक फंसा रहेगा, उसका जिसने खरीदा है वो गया, तो इसलिए मुसीबत वहाँ पे आने वाली है। इसलिए हमारी गर्दन बचाने के लिए और तुम्हारी गर्दन बचाने के लिए ये है कि भाई जिस हर को भी कंट्रोल करें। हाँ देखो ऐसा है, आई ऑलवेज से वेरी ब्लंट, ठीक है? और देखा होगा बीसी में भी मैंने तुम लोगों को झाड़ दिया, इसलिए ऐसा नहीं है कि कौन क्या है, नेवर बॉदर। अगर वो हो जाता है तो प्रॉब्लम So we will be easy doing other things rather than putting our heads on. You know, the data is quite big. Primary stage where we have to control. प्रॉपर वे में डेटा लाना है सब, तो मतलब आ जाएगा। अगर प्रॉपर डेटा में डेटा नहीं है तो वो डेटा Which first phase में issue आएगा, that is very old. That construction started in 2001. उसके लिए solution निकालने होंगे। But that is the primary data. दो are related. One is the 230 MB जो है वो पूरी डेटा प्रोड्यूस करेगी। इसमें 27 माइनर्स हैं। Second, both 2 files which are there, that has been converted from ये सब में इश्यूज आ सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो पॉलीगॉन को और टाइम से उसमें डाला होगा, तो दैट विल बी इशू। वो एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें के कन्वर्जन हम लोगों ने कैसे किए थे मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मोस्टली आई थिंक इन्होंने ही बैठ के सर ये किसके काम चालू करो? साचो का नहीं So, because that is the main file which everybody will see having, and that उसको pressure करके अपन उधर से ले आएंगे हमको। ये एक्सेल फाइल वाला जो है वो ना नहीं DW तो 230 सारे इंडिया का नहीं है। एक BSA वाला है वो। छोटे एरिया में जाना है तो सबका रिजल्ट इंडिया भी अच्छा आएगा। मुझे इसको बोलो ना पूरा इंडिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए लगाना, तब जाके देखिए। ये फिर तो इसमें भी खुल जाएगा। हाँ, छोटा एरिया पे ये मॉडल बहुत अच्छा है, बड़ा है, और ये भी इसको करेक्शन करके ये डाला है। मुझे इतना अच्छा ये मॉडल का रिजल्ट अच्छा, वो यूरोप और यूएस का डेटा तो वैसे भी क्लियर दिखता है। सर यहाँ यही करा दें? हाँ मैं बोल दूँ
हाँ Automatic passing water restriction. ये ऐसे नहीं पास क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला आपका तो पूरा आपका ग्रे में आ रहा है ग्रे मतलब आपका टाइम वैल्यू लॉस है यहाँ पे किधर है ये आपने जूम करो यहाँ पे शब्द से उसको हाँ उसके ऊपर एक काम करते हैं जूम करो कोई थोड़ा सा नीचे हाँ थोड़ा सा ऊपर बस और जूम आउट करो हाँ ये DXF फाइल किस पे कैसे खुलेगी? DXF टाइम में नहीं रो में इंपोर्ट वो उधर एडिटर तो नहीं लेगा आपको पता नहीं चलता ऐड फाइल में नहीं कर रहा है ये क्लिक हो जा रहा है वो गेम में आया वो गेम से क्लिक हो जा रहा है वो गेम में अगर उस साइड पे भी आपका वो है ना इसीलिए दोनों साइड पे आ गया ना इसलिए वो ऐसा आपको जहाँ तक अगर देख लेते आप तो आपका सही जगह तक देखिए यहाँ पे रिजल्ट सही आ रहा है परफेक्ट रिजल्ट ये मतलब ये प्लॉट्स आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर प्लॉट्स है उसमें वाटर स्टक है ये इरिगेशन हुआ है समझ में उधर फ्लड भी हो सकता है एग्जैक्टली फ्लड की वजह से फ्लड तो हाँ तो आप एक काम करो ये तो एक पॉलीगन ड्रॉ करो यहाँ पे सही सबसे नहीं यहाँ पे सब फिर इधर गया है ना हाँ इसको ये रॉड को हटा ये रॉड को हटा के फिर हाँ मैम परफेक्ट वेरी गुड ये कलर कंपोजिट हो गया एग्जैक्टली ये लास्ट ये वो आपके पास नहीं आएगा हाँ नहीं उधर कोई बात नहीं वो आप बिल्कुल जूम करके कोई बॉडी पार्ट को क्या सही आ रहा है अगर ये सारे एरिया होगा तो आपको और वापस भी ये ठीक है आज तो देखते हैं सबका बहुत मन है देख रहा हूँ सर मॉडल हो रहा है तब तक नहीं है मॉडल 1 है सर
तीसरी बार कर रहे थे। ठीक है दूसरा अपने अपने आप प्रैक्टिस जो किया बनाया है ना और वो है। सर को देख के जो बनाया पास वो आउट नहीं है। सर जो दूसरा किया वो अभी थर्ड चल पॉइंट रहा पे है। रन तो हो रहा है। देखो अपने किया वो हो रहा है। मतलब पता नहीं सब कोई पॉइंट मिस कर रहे होंगे। ना ना करना पड़ेगा कि मैंने पंख कल का होगा रिक्रिएशन मॉडल और बाकी होगा आईजीएस ऑनलाइन शेयरिंग कॉन्सेप्ट ये सब होगा कल और तो आपको ड्रोन का भी दिखाना है मॉडल और जैसे बोलने के बाद फर्स्ट वन पर काम का स्टार्ट करते हैं बोले एक दो पीछे ना ना पहले हम बीच में रहेगा ना मॉडल बार फॉर्मेट तो रेड है मैं मैक्सिमम का टाइम आते हैं कई तो क्रैश कर रहा है ठीक से क्रैश कर रहा है अभी क्रैश कर नहीं DXF फाइल DXF फाइल जब कैट टू जीडी कैट फाइल हाँ कैट टू जीडी वाला जो टूल है ना नहीं कैट जरूरत नहीं है मैंने बिना उसके भी किए कैट को डायरेक्ट ओपन क्रैश हो रहा है हमारे इसमें टच कर रहा है टू सिस्टम है वो मैं ऊपर WhatsApp पे डाल देता हूँ अच्छा पहले देख लेते हैं क्रॉस चेक करते हैं सारे सारे ये स्टेज एक बार तुम्हारे सिस्टम में डाल देगा फॉर्मेट क्या है वो डायरेक्ट यहाँ पे डेमो ट्रेन प्लानिंग और ट्रेन करेक्शन ज्योमेट्रिक ट्रेन करेक्शन उसको पोस्ट करके छोड़ सकते हैं कि नहीं उसको एक बार अगर करना है पोस्ट करके छोड़ सकते हैं कि कल से वही से पोस्ट बिना रन किए मतलब पूरा रन नहीं हुआ है तो आपने रन करना स्टार्ट कर दिया कब कब देन बंद करने से आपको हो गया वो जीरो से करवा के शुरू होगा फिर कल से नहीं आपको पूरा पहले से स्टार्ट ना मतलब कोई जीरो से हाँ जीरो से पहले से चलो काल आप लोग का चार वो DXF फाइल भेज दो हाँ BX में से सर हाँ वो मास्क सब साउथ सब छोटी है ठीक लगा दिया ये पूरा हाँ अच्छा है ठीक है नहीं ठीक है अपना छोटा सा हाँ चाहिए यूनिट पे कंफर्म करके ये DWG भेज रहा हूँ कलर
31 MB. सारा कंपोजिट वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम हो गए। ये पॉलीगॉन कट करने के बाद सेट प्रोसेस ये ऊपर वाला ये वाला मैंने वो क्लिक है ना यहाँ ये आपका यार है ना ये इसकी वजह से ये फैल रहा है। आप इसको थोड़ा सा अंदर से काटिए, अच्छा ठीक है, तो आपका स्ट्रेच और भी अच्छा होगा। ओके हाँ हाँ ठीक है। समझ गए वो स्ट्रेच वो इसका हाँ। वो है वो भी तो लेगा ना कंट्रोल है हाँ मैं कर लेती हूँ कट कर रहे हैं तो अच्छा है। थोड़ा सा अंदर से काटो। यही ऐसा रहा है मेरे में भी। डॉट DWG भी डॉट देखो DWG भी भेजा है। तो हाई सो नेट की स्पीड अच्छी है इसलिए खटाखट होएगा। तो ये कितना टाइम में करेक्ट तो उसको सेव मॉडल को सेव कर दो और सेव एज करना है तो सेव एज करके नहीं वो सेव चलेगा मॉडल वाली फाइल को ले लो कल आते हैं। हाँ कल कल आके शुरू करके मैं ये रन करना राइट क्लिक करके एडिट करके मॉडल ओपन करेंगे। हाँ फिर लॉगिन करके वो हाँ हाँ यस ये मुझे एक घंटा मिलेगा उसको DWG ओपन हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। क्या DWG ओपन DWG डाल हाँ ये मॉडल में रन हो गया। हाँ यहाँ पे सेव में जाओ मॉडल में जाओ यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा है। अभी तो अगर डाउन में जाना है सेव एज करना है कहीं पे जो टूल बॉक्स है उसी टूल बॉक्स में तुम यहाँ पे नाम दे सकते हो। हाँ जैसे दे दिया फ्लड मॉडल स्पेस मारते फ्लड अंडरस्कोर मॉडल इससे तो जो नेक्स्ट में आते हैं वही फ्लड मॉडल को इसी प्रोजेक्ट के अंदर उसी टूल बॉक्स के अंदर जाके कहाँ पे होता है टूल बॉक्स का। हाँ ये टूल बॉक्स में नहीं कैटलॉग है कैटलॉग में ये प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है माई प्रोजेक्ट यहाँ पे सेट किया है डेवलपमेंट जाके ऐसे कल जाके आके इसको राइट क्या अभी हो रहा है ओपन हो रहा है क्या तुम्हारा सिस्टम को वो करो रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट तो किया ना नहीं वो इंस्टॉलेशन करना है डायरेक्ट ऐड करो वो DWG फाइल है बहुत बड़ा फाइल है